discipline, a subject of humanities, the social sciences, is that subject a discipline which deals with, broadly, very broadly speaking, the political dimension of the human life. What does it do? It deals with political dimension. But then the immediate question would be, what is meant by this subject dealing with the political dimension? What makes an aspect, a dimension, a facet of our life or anybody's life political in nature? Okay, now to begin with, the thing political, your term political, is something which is connected with, related to the matters which are known as public matters. Okay, and not primarily the private matters. Primarily, we are saying. Mainly, primarily, substantially, political things relate to the public matters. Something which is known as public, which is not obviously part and parcel to begin with the private. So when we say pol science as a subject deals with political dimension, a political facet, a aspect of human life, then it deals with, simply speaking, the public affairs, the public matters, the public issues, the public problems, and public challenges, controversies, so on and so forth. Okay, so political dash the public one. Now, why is it that we need to think about the political dimension or the public dimension of human existence? Because we know for sure that, as quote unquote, the father of pol science, Aristotle famously stated that man is a social animal, first social animal, and man is a political animal. Now, when Aristotle says this about human being, a man being social animal, then he was trying to underline the very first fact, the primary fact, that human being, okay, cannot live life in isolation. Secondly, because none of us, none of the existing human being happens to be in possession of the full capacity and ability to fulfill one's own needs. Rather, Aristotle argued that all of us, okay, are known for limitations as far as our personality, our individuality, our capacity is concerned. So very simplistically speaking, we as human beings have certain needs. So one are material needs. Okay, we need to feed ourselves, we need to sleep, we need to drink, we need to so on and so forth. Okay, material needs for which we require resources. But then on the other hand, being human being, endowed with the faculty of rationality and ability to speak, think and speak, we have also non-material needs. Okay, material needs, no doubt about that. But it is because of the reasoned nature of human being that we are also been having, rather, since antiquity, non-material needs. You can simply say mental needs, you can say spiritual needs, you can say, now what is mean by mental, spiritual, psychological needs? It means when we look around us, no doubt we look at the material resources, but then we immediately start thinking that how should these resources be distributed? Now, for a human being, X might be the appropriate way of doing that. Somebody would say, no, I want resources to be distributed in Y manner. We have disagreements here. Okay, but certainly we have ideas about how to organize our, and now we are getting into another important dimension of the subject of pol science, how we are supposed to organize our collective life. We cannot live in isolation. We tend to make groups, and the very first group happens to be family. Then the collection of family led to something called as a bigger collectivity in the life of human being, that is the villages. Okay, and thus from villages to the city state. That is how Aristotle thought of human evolution. So man, being social animal, has the tendency, or known for the tendency, to form groups such as family, such as village,
And then the ultimate group, the highest form of human association according to Aristotle is state, यानी कि city state. अब यहाँ वो दूसरा statement आता है. Aristotle also famously argued that man, besides being social animal, also is political animal. अब ये political का मतलब क्या है? Now, individual to family, it happens because we are limited being. We do not possess every ability to fulfill all our needs. We are very limited in that sense of the term. Therefore, we tend to form groups. We form family, and thereby we try to fulfill certain our biological needs, okay, certain material needs, no doubt about that. But family alone cannot fulfill our needs. Then collection of family and evolution of the village. In comparison with family, village is better placed to fulfill more of our material needs, few mental needs, but not all mental, not all spiritual needs. Yeah, normative needs, let us say, yeah, moral, ethical needs, let us say. So I'm using all these words synonymously. Mental needs in right sense of the term, spiritual needs, psychological needs, okay, ideational needs, so on and so forth. So अब ये ऐसा क्यों है कि fine, we have family, not sufficient, fine, we can understand evolution of human being from family to the village, but why isn't village is the ultimate level of human association? Because again we know the answer, because even if village is a broader collectivity, यानी कि larger than the family and fulfills more needs of human being, village cannot fulfill all our needs. Okay, इसीलिए we witness another formation, another human association, which is known as the city state. अब यहाँ that political, man being political, is what we get to know. Village to state. Okay, so let us make it very simple. Individual jump from individual to the family, jump from family to the village, and now we are going to get to see the jump of human being from the village to the city state. अब ये क्या है? And here we have to look into another important argument by the father of all science, that is Aristotle. He argued that what is the goal of human being? What is the objective of human being? Now, somebody would argue to fulfill one's own material needs, to have a safe life, safe and secure life, to ensure material prosperity. Okay, these can be answers to the question, what is the objective of, what is the aim of the human being? But then Aristotle argues that this is just part of the answer. Okay, to have a secure life, to have material prosperity is very much part and parcel of the human goal and objective. But that is not the ultimate one. There is something which is ultimate as far as the human goal and human objective is concerned, and he uses the word, वो word हमें पता है. What is that word as objective? Good life. अब मुझे बताइए good life का मतलब क्या है? If there is something called as good, then there is going to be something called as bad. Now ये कहाँ से आया है कि there is something called as good and there is something called as bad? Now we are a rational being. We have the ability to think rationally, and it is because of this ability to think rationally that we evolve that capacity to distinguish things between right and wrong, appropriate, inappropriate, यानी कि सही है, गलत है. ये जो distinction आया है, क्यों आया है? Why don't we have the similar kind of distinction in other animals? Now, does a tiger think about before eating up some other animal? No, not at all, because that is the natural order. The lion, the tiger is part of, the fox is part of. But we are human being, okay, and we are a particular kind of particular kind of species, है ना? Human species बोला जाता है. And what is the distinguishing mark of human being? The ability to think. And it is because of that ability that we started thinking about organizing our collective life. So
to have a collective life was inevitable and it was very natural according to Aristotle. यानी कि ह्यूमन बीइंग का फैमिली फॉर्म करना, फैमिली का विलेज में इवॉल्व होना, दिस इज वेरी नेचुरल. This is not artificial process. This is obvious and which is rooted in the human nature. So individual, family, village, and then ultimately the city state. So man is a social animal and man is a political animal. So getting back to our attempt at a primary level to define pol science. So pol science as a subject studies the political dimension. What is political? Political is that which is connected with the public matters, public affairs. And then we got back to directly Aristotle, who is understood as father of science, where unfold the political nature of human being in a having the objective. Our wealth is safe and secure, and that's the story of the human being. बिल्कुल नहीं है. Human being, because of the faculty of rationality, would keep thinking about how should our collective affairs be organized. अब उसका थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं एंड इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आते हैं. After death of Aurangzeb in 1707, decline of Mughal Empire, gets a fillip. And then in 18th century, we get to see rise of so many regional powers. Lot of conflicts between the regional powers. And it was the same period when different European companies, trading companies, had made inroads into Indian subcontinent. They also fought against each other, against the regional Chhatrabs as well as the other trading companies. And ultimately, in the second half of the 18th century, the 1765 is the very important year. East India Company, British East India Company, established decisive hold over Indian society. Ab company rule lasts from roughly 1765 to 1857. Okay, we fought against the company rule in the form of the Great Revolt, the revolt of 1857. Because of so many reasons, so many sections of Indian society were deeply dissatisfied and they came together, mobilized themselves and sought to bring down the regime of the British East India Company. But we badly failed in that because of so many reasons. And then we come under the direct rule of the British Crown from 1858 to 1947. So earlier the British East India Company rule, company का rule, और बाद में आता है Crown का rule. Now in the second part of the colonialism, that is under the Crown rule onwards, धीरे, slowly and steadily, we started becoming aware of our different and distinctive nature as Indian people. So we are Indians, they are foreigners, and they are not only foreigners. This is not just a foreign rule, but it was a colonial rule. And colonial rule had established the political control precisely in order to exploit us. They were deeply interested in the resources. अब ये हुआ पता चला हमें. And then eventually, as and when the awareness grew, we see the witness the birth of nationalism. So formation of Indian National Congress, moderate phase, extremist phase, then comes the Gandhian phase. So this was the mainstream of the national movement, number one. Number two, on the other hand, there were so many other organizations, so many other movements, agitations with their own ideas. They were also fighting against the colonial regime, British colonialism in India. And then in the middle of the 20th century, so in 1947, we become independent. Now, in these 150 odd years, let us say, or 200 years, we had begun to imagine our collective life in a different manner. We as Indian people, we were not aware of that. But as and when we started gaining that awareness, we started thinking about our collective life. Now, Tilak's famous statement,
Swaraj is my birthright. What was that? Extremists were deeply critical of moderates because moderates did not have Swaraj, yeah, independence as their goal. Whereas the extremists and the leader of the extremists, and we have uh, Aurobindo as one of the 5 modern political thinkers, Aurobindo as the leader of the extremist phase, demanded that we need Swaraj. So be it Tilak, be it Aurobindo and other extremist leaders, they were very critical of the moderate leaders for not having Swaraj, yeah, independence as their goal. And they were also critical of moderate phase for their strategies and means that they had employed to resist the British rule. Okay. अब extremist का vision ही अलग था. So we know for sure that Chatusutri, Swaraj as the goal. Okay. Then boycott. If we are going to boycott everything foreign, then we are going to require Swadeshi goods and services through the Swadeshi. And then last comes the national education. That is the Chatusutri. That is the 4 formulas which are part and parcel of that strategy. What was this? This was extremist vision of our collective life. Mahatma Phule in 19th century and Dr. Babasaheb Ambedkar in 20th century seek to puncture this mainstream understanding of how to organize our collective life. Mahatma Phule always used to write and talk in terms of Stri Shudra Ati Shudra. Stri women, Shudra and Ati Shudra. Ati Shudra, that is untouchables, Dalits and untouchables. Shudra, today's Bhasha, OBCs. Okay. So what about them? That was the pertinent question raised by Mahatma Phule. So Mahatma Phule, through his Satyashodak Samaj Society and his notion of religion, Sarvajanik Satya Dharma, look at the name of the religion, Sarvajanik Satya Dharma. He was imagining of the Indian collective life. And this is what, as student of Pol Science, we are going to understand, we are going to make sense of as part and parcel of how to organize our collective life. Okay, so we are going to study at length and look into the political dimension of human life, political, something which relates to public issues. Okay, then we identified saying it, how to organize our collective life, and being part and parcel of collective is natural to human being, as rightly argued by Aristotle. Man being social animal, also political animal. Now, when Aristotle argued that man is and by nature, so nature कैसा है man का, according to Aristotle, political, social behavior political है. उसका ये कतई मतलब नहीं था कि man was bound to contest elections and become MP या become prime minister. Not at all. What he was referring to was human beings' unique ability to think rationally, conceive ideas, exchange with others, and then evolving the best way of organizing our collective life. That is something which we are going to discuss as the core of Pol Science. So this is one way. The another way of understanding Pol Science is through one central theme from Pol Science. J.W. Garner, a famous analyst, he defined Pol Science, and this is a very old traditional notion of Pol Science, a definition of Pol Science. So how did he define Pol Science? He argues that Pol Science is that subject, that discipline, हमारी भाषा में that optional, which studies state. और उनका statement जो था, Pol Science begins with state and ends with state. Now, how are we going to establish the association between whatever we just discussed on one hand and the state on the other hand? So if in Pol Science, if we are going to study political dimension, which are about the public matters, which is about how to organize our collective life. Okay, so when we dealt with this question, when we reflected on this question, when we thought through this question as to how to organize our collective life, then one important outcome of this critical thinking process
is the evolution of the agency called as institution called as the state. So how do we organize our collective life? Through what mechanism? What is the answer possible here? As of now, the state. So we evolved the institution called as state. We evolved the agency called as state. I'm using these words just for sake of convenience. Agency, institution, association, mechanism, but institution is the right word. Institution of state. Now, can we think of organizing our collective life without state? Now, we tend to answer the question saying, possible ही नहीं है. It is not possible. Now, let us start with Plato itself. Plato argued, again, like Aristotle, लेकिन Aristotle के पहले Plato आते हैं, उसके पहले Socrates आते हैं. So, Socrates, Plato, and Aristotle shared one thing in common, besides so many other things, but here that one thing is very important, which all of them three shared in common: good life as the objective, as the goal of the human being. Number one. Number two, another similarity between Socrates, Plato on one hand, and Aristotle on the other hand. What is that second similarity between the two? Both of them thought that without state, it is not possible to realize the goal of good life. I hope you got it. अब ये प्लेटो अरिस्टोटल का किस्सा हुआ. We straightway come to the modern period, and we have Machiavelli as the first modern political thinker. 15th century and 16th century. 15th and 16th century. Okay. He was born in the year 1469. Machiavelli, Niccolo Machiavelli. Now, that was a very important period, at least in European history and in the history of entire humanity, because Europe was going through a transition. Okay. From the medieval to the modern. And in the same period that the European society was witness to something called as a Renaissance. Okay. The rebirth of the ancient Greek and Roman knowledge, in which the Socrates, Plato, and Aristotle's idea are very, very significant. We will look into that. Okay. अब वो Machiavelli as the first modern political thinker, उनका क्या कहना था? Now, Machiavelli is, by the way, known for realism. But again, Machiavelli is always known to all of us through his great work, which is a classic in itself, that is The Prince. And he is also famously known for giving advices to the king. You have to be like a fox, and also you have to be like a lion. You must possess both the abilities. You must be cunning enough to identify the trap, okay, of the enemies. But then on the other hand, prince also must possess the strength of a lion. वो दोनों भी बताते हैं. तो ये क्यों कहते हैं Machiavelli? So Machiavelli, through the prince, the work Prince, was advocating for Italy in that particular context of late 15th century and early 16th century. Machiavelli was making a case advocating princedom, that is the monarchical form of state. And he argued that Italy was divided into 5 principalities, and it was going through a mess. There was anarchy, there was a lot of corruption. Now, and Italy, and one of the 5 principalities of Italy was Florence, and Machiavelli comes from Florence. Now, it was a paradox. It was a contradiction. Culturally, Florence and Italy were, let us say, on the peak, but politically divided. That was the paradox of the life in Italy in general, and Florence particularly. Culturally vibrant, very well developed, but politically divided. So it is in that context Machiavelli proposes princedom, the central role of prince, the monarchical kind of state, to bring what? Order to Italy. And he was really, really worried about the unification of the Italy. And keeping in mind, अब मैकेवेली का गोल क्या है, उसका पूरा पॉलिटिकल प्रोजेक्ट क्या है? जैसे प्लेटो का पॉलिटिकल प्रोजेक्ट था आइडियल स्टेट बनाना, एरिस्टोटल का था, उसने खुद के टीचर को देखा था कि प्लेटो एज द ग्रेट टीचर ऑफ एरिस्टोटल
always thought in terms of, and Republic is the classical work by Plato. So ideal state, ideal state, state a prototype, state a model state. अब ये प्लेटो ने सामने रखा था, और वो एरिस्टोटल वाज स्टूडेंट ऑफ प्लेटो अराउंड 18 years. That Aristotle, as student of Plato, subsequently realized the impracticality of the idea proposed by Plato. And therefore, Aristotle always thinks of the best state, but उसके बीच में एक आता है best practicable state, यानी कि best practical state. So, दोनों के लिए स्टेट इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके फॉर्म अलग अलग बनते हैं, वो भी हम बाद में देखेंगे. डोंट वरी अबाउट दैट. अब सीधा आते हैं हम 17th सेंचुरी को. मैं सिलेबस का भी जिक्र कर रहा हूं. सो आफ्टर मैकियावेली, in 17th century we have two English philosophers, and they are part of our syllabus. One is Thomas Hobbes, who comes from the first 50 years of the 17th century and the decade of 1640s. That is very important. And England was witness to a bad, ये ऐसा सिंपल लगेगा आपको, witness to a very vehement kind of civil war. And king was assassinated. That was what the English society was witness. Civil war. किसी ने बाहर वाले शक्ति ने आप पे अटैक नहीं किया था, अंदर ही चल रहा था. Civil war is that war. Okay. So that is the first half of the 17th century wherein we get to see Thomas Hobbes. अब ये हॉब्स क्या बताते हैं, बाकी डिटेल तो बाद में देखेंगे. Thomas Hobbes, in the context of civil war in England, thought of state as essential institution in order to bring order back to the English society. But what kind of state? Now we saw about Machiavelli, who suggested monarchy. But Thomas Hobbes goes many more steps ahead of Machiavelli and argues that we require absolute state. यानी कि स्टेट होना चाहिए, लेकिन एब्सोल्यूट स्टेट का मतलब क्या है कि स्टेट एंजॉइंग all powers, concentration of power in the hands of the state. मोनार्क से भी ज्यादा इतना पावर थॉमस हॉब्स स्टेट को देते हैं. बट another very important thing which is a very significant contribution by Thomas Hobbes, और वो पॉल साइंस में हम पढ़ेंगे. there is a school about state, about the origin of state, about the nature of state, about the role and function of state, social contract theory. Thomas Hobbes was the propounder, followed through up by John Locke and then the Rousseau. These are the three very famous Western social contractualists या contractual thinkers. उनका और सबसे पहला कौन था? थॉमस हॉब्स था. उसका ये कहना ये था कि state is not a divine institution. State is not created by God, but state is created by human being. Now this was a very important proposition on part of Thomas Hobbes, and it was 17th century. and Europe, जैसे हमने कहा कि 15th century में रेनेसा शुरू हुआ था, उसी थोड़ी देर बाद, कुछ सालों के बाद रिफॉर्मेशन शुरू होता है, मार्टिन लूथर्स लैंडमार्क. And then on the other hand, we also get to see significant landmark revolutionary developments in the domain of science and technology. न्यूटन है, so on and so forth, गैलीलियो है, वो बाद में हम देखेंगे. Okay, so developments in the domain of science. Okay, so keep in mind that is significant developments in the domain of science. अब साइंस का डेवलपमेंट होने का मतलब क्या है? मतलब our outlook had begun to become this worldly. We as human being began to apply our faculty of rationality. We started observing the reality and then started looking into the same in a very critical manner. And one by one, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसा इन्वेंशन आता है. We'll look into the details later on. Okay, अब ये एक तरफ चल रहा था. उसी दौरान थॉमस हॉब्स ये बताते हैं कि स्टेट इज नीदर अ नेचुरल इंस्टीट्यूशन. अब ये नेचुरल इंस्टीट्यूशन किसने कहा था स्टेट को? एरिस्टोटल कहते. हॉब्स इज सेइंग स्टेट इज नॉट नेचुरल इंस्टीट्यूशन, नॉर इज स्टेट अ डिवाइन बॉडी. वो डिवाइन भी नहीं है, तो फिर क्या है? ह्यूमन मेड है वो.
दिस वॉज अ वेरी सॉर्ट ऑफ अ रेवोल्यूशनरी आइडिया. उस कॉन्टेक्स्ट में आप उसको सोचिए, उसके बारे में पढ़िए. तो सो दैट इज फर्स्ट वन. उसका मतलब यह है, थॉमस हॉब्स, by looking at state as a human made association, presents state before us as a machine. I hope you got it. So what was state for Thomas Hobbes? A machine, artificially created thing, artificially created institution. अब साइंस का जिक्र आपको समझ में आएगा. और साइंस किस चीज के लिए जाना जाता था? शुरुआत जो हुई थी, तो साइंस evolved a method through which, and we are talking about the modern period, and that's why Newton is important, that's why Galileo is important, and so many other scientists are important. So what was their argument? The science wale jo bhi the, scientists jo the, so they invented and adopted a method generally known as the scientific method, through which they began to look at, they started looking at nature as an order. यानी कि nature is an order, nature has some sort of order, it is like a machine, है ना. मशीन का भी रूल एंड फॉर्मूलाज होता है, वैसे ही इस नेचुरल ऑर्डर का डायनेमिक्स है, उसके रूल्स है, उसके रेगुलेशंस है. सो वी शुड ऑब्जर्व दिस नेचर एज ऑब्जेक्टिवली एज पॉसिबल, ओके, लाइक अ साइंटिस्ट, एंड देयरफॉर द साइंटिफिक मेथड बिकम्स इंपॉर्टेंट. अब ये वाला जो साइंस के डोमेन में हो रहा था, उसका बहुत ही डीप इंपैक्ट हॉब्स पे था. सो देयरफॉर अगर गैलीलियो, न्यूटन कुछ बहुत ही रेवोल्यूशनरी कर रहे थे इन द डोमेन ऑफ साइंस, सॉर्ट ऑफ सिमिलरली थॉमस हॉब्स वाज प्रपोजिंग सो मेनी रेवोल्यूशनरी आइडियाज इन पॉलिटिकल डोमेन. एंड यहां वो उनका कहना आता है कि इफ वी वांट ऑर्डर इन सोसाइटी, there is no other way besides the state. But what kind of state do we require? Absolute state. Strong and sovereignty. Sovereignty, by the way, is very important idea in pol science. Yani ki supreme power. And which agency, which institution enjoyed supreme power? It is the state. But again, let us not forget about that. Who created state? How did state come into being? We are the karta dharta of the state. Simple si bhasha. Okay. Now, from the same century, but the second half of the 17th century, comes John Locke, another English, very famous philosopher. अब वो भी स्टेट के बारे में सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी ही प्रपोज करते हैं, एंड ही ऑल्सो आर्ग्यूड दैट स्टेट इज क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग, यानी कि फॉलोइंग द थ्रेड ऑफ थॉमस हॉब्स. बट देयर इज अ फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द वे इन विच थॉमस हॉब्स अंडरस्टैंड स्टेट and the way in which John Locke understands state. Similarity एक दोनों में है. क्या है? दोनों भी ये बताते हैं कि state is created by human being through social contract. In other words, philosophically speaking, state is based on consent of the people. State is based on consent of the people, plain and simple. Okay, ये दोनों भी कहते हैं. लेकिन the kind of state which is proposed by Thomas Hobbes is absolute state, unlimited state. There is no limitation on power and authority of the state. But the kind of state John Locke proposes, that state is accountable, that state is responsible, that state is limited one. And when does he do that? I'm broadly saying second half of the 17th century. And here is a landmark development which takes place in England, English society, 1688 Glorious Revolution. What is that? 1688 Glorious. What had happened? English people, especially the middle class, revolted against the absolute monarchy. England had absolute monarchy, unrestrained absolute monarchy, and divine origin theory was used to justify the absolute power authority enjoyed by the monarch. So what 1688 Glorious Revolution does, the middle class revolts against the absolute monarchy and forces monarch and the monarchy to transfer power substantially from the monarch to the parliament. Now, parliament was the body, the institution, the branch which was to be constituted on the basis of the election.
That is, the parliament was going to be constituted by the elected representatives of the people. So ये हुआ था इंग्लैंड में. And so many scholars argue that this landmark development in England must have deeply influenced and inspired John Locke. So therefore वो स्टेट कैसे बताते? नॉट एब्सोल्यूट स्टेट, है ना. तो स्टेट कैसे बताते? अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल एंड लिमिटेड स्टेट. और यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडिया जॉन लॉक हमारे सामने रखते हैं. उसकी शुरुआत हॉब्स में होती है, लेकिन लॉक में वो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है. द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल राइट्स. व्हाट इज दैट आइडिया? Natural rights. Now, what is this concept of natural rights? Simply speaking, natural rights are those rights as if which are given to us by the nature, as if we enjoy those rights as part of the natural order. Matlab, the rights which are not given to us by the society, or the rights which are not granted to us by the state. So neither society nor state happens to be the source of rights, but the nature happens to be the source of right. But उसका सही अर्थ ये है, नेचर का मतलब वो एक बात है, लेकिन लॉक जिस नेचर की बात कर रहे थे, ह्यूमन नेचर था वो. सो नेचुरल राइट्स आर दोज राइट्स विच आर रूटेड इन द नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग. उसके बारे में बात की चर्चा बाद में करते हैं. ओके, नाउ जॉन लॉक आर्ग्यूड that there are three natural rights without which human being cannot lead a dignified life. Yeah, human life. One is the right to life. The second is the right to freedom, या liberty बोलिए उसको. और तीसरा है right to property. तीन natural rights की वो rights का वो जिक्र करते हैं. नंबर 1 right to life, नंबर 2 right to liberty या freedom, और नंबर 3 right to property है. These are what kind of rights according to John Locke? Natural rights. अब वो स्टेट के बारे में बात करते हैं. Now get back to Thomas Hobbes. Why did human being establish through social contract state? Why did human being create state through social contract? हमें आंसर पता है. To bring back order and secure and safeguard human life. Okay, because England was going through civil war, anarchy. Nobody's life was safe. Everybody was going through the similar kind of anxiety, similar kind of insecurity at a general level. Nobody's life or position were safe. इसीलिए वो थॉमस हॉब्स वैसे बताते हैं. Now, in case of John Locke, what Locke is arguing here, that state is created by human being through a contract, but for what purpose? अब आंसर हमें पता है. In order to preserve the three natural rights, life, liberty. अब नेचुरल राइट्स का यह भी अर्थ होता है सिंपल सी भाषा में, अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक, दिस थ्री नेचुरल राइट्स आर दोज राइट्स विच आर इंट्रिंसिक टू अस. उसको अलग ही नहीं कर सकते हम. कैन वी थिंक ऑफ ह्यूमन बीइंग विदाउट एनी ऑफ द थ्री राइट्स? नॉट एट ऑल. कैन वी थिंक ऑफ ह्यूमन लाइफ, सॉरी ह्यूमन एग्जिस्टेंस विदाउट लाइफ, राइट टू लाइफ, विदाउट राइट टू लिबर्टी, विदाउट राइट टू प्रॉपर्टी? नो. दीज आर इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग. उसका डिटेल डिस्कशन बाद में करते हैं. But nonetheless, John Locke also thought the necessity of, presented the necessity of state. लेकिन किस चीज के लिए स्टेट चाहिए? For the preservation of the three natural rights. That is very interesting. And then comes Rousseau. Rousseau is a very interesting figure in the tradition of Western political thought. उसके बारे में अभी मैं ज्यादा नहीं बताता हूं. Just a couple of things. Okay, and then we'll get back to the syllabus. Rousseau comes from 18th century. Rousseau is that philosopher, that French philosopher, who is known as the philosophical foundation, intellectual foundation of the French Revolution. Okay, Rousseau, Diderot, Voltaire, these are very important figures and philosophers who laid down the intellectual and philosophical foundation. अब किस टाइप का था वो? अब लाइक हॉब्स एंड लॉक, रूसो ऑल्सो सब्सक्राइब टू द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी एंड आर्ग्यू दैट स्टेट इज क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग सोशल कॉन्ट्रैक्ट. ये बात समझना चलिए. अब सवाल आएगा, फॉर व्हाट पर्पस? किस चीज के लिए स्टेट का निर्माण किया है ह्यूमन बीइंग? लॉक के बारे में अब पता है हमें.
सो फॉर लॉक टू प्रिजर्व द 3 नेचुरल राइट्स. फॉर हॉब्स आप एक ही शब्द इस्तेमाल कीजिए और ध्यान में रखें, सेल्फ प्रिजर्वेशन बोलिए उसको, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ. ये थॉमस हॉब्स का था. आप रूसो क्या बताते? तो इधर यहां थोड़ा सा एक थोड़ा अलग डिस्कशन करना पड़ेगा. नाउ रूसो कमिंग फ्रॉम 18th century. Okay. By then, what had happened in Europe? Renaissance had already happened. Reformation had already happened. And Enlightenment was the age where the European society has entered into. 18th century is known as the age of या century of the Enlightenment. अब हुआ ये था उसकी वजह से कि life in Europe, including France, okay, was designed, was crafted, was built, constructed on the basis of the faculty of human being, that is the rationality. So everything, our social life, our political life, our economic life. आप social life का खाली simple सा example लीजिए. About the social life, human being began to argue that we are rational being. We can understand things around us. We do not require the authority of the church. We do not require the dharma guru. We have faculty of rationality and we can make sense of our surrounding. And thus the demand of liberty, demand of freedom as free space on the basis of that belief in the faculty of rationality. और इसलिए फिर पॉल साइंस में पहली आइडियोलॉजी मॉडर्न एज में आती है लिबरलिज्म. And liberalism as the first ideology of the 17th century, which emerged in 17th century, and John Locke is known as the father of liberalism. तो वो जो फैकल्टी ऑफ रैशनैलिटी है ह्यूमन बीइंग की, वो आर्ग्यू ये करती है या उसके आधार पे ह्यूमन बीइंग आर्ग्यू ये करता है, वी नीड अ फ्री सोसाइटी ऑफ फ्री इंडिविजुअल्स. दो ही चीजें दिमाग में रखिए. व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी डिड दिस rational human being demand? Yeah, started to demand free society of free individuals. अब free society का मतलब क्या है? Society which does not impose constraint. No social constraint, no religious constraint, no constraints in the form of superstitions, so on and so forth. Customs and superstitions and so free society. अब आपका social life rationality के आधार पे क्राफ्ट किया गया. Political life, we just saw 1688 glorious revolution, wherein the state was transformed into accountable, responsible and limited. जो बाद में जैसे जैसे आगे आते हैं तो state becomes a representative institution, and as a form of government, democracy, okay, is adopted in Europe in 19th century. But accountable, responsible and limited state. The basis of state is the consent of the people, consent of the governed, consent of the ruled. ये हमें अभी पता चला. तो सोशल में रैशनैलिटी के आधार पे आपके सोशल कंस्ट्रक्शन की बात शुरू हुई. पॉलिटिकल में भी रैशनैलिटी, लोगों ने बोला कि नहीं नहीं, वी आर नॉट गोइंग टू एंटरटेन विद एब्सोल्यूट मोनार्की. वी वांट अ स्टेट which is accountable to us. So even the political life came to be crafted on, built on, constructed on the basis of rationality. आपको कौन सा रैशनल इंसान बोलेगा कि आपको जो करना है सर कीजिए, चलेगा हमें? Why do we have whatever is happening in India since last 1 month and today in Delhi? Because we believe that we have elected you, बाबा. आप ऊपर से नहीं आए हो. The source of government is the people, is the mandate of the people. So you are accountable to us. You have to be accountable to us. तो ये पॉलिटिकल बदला, यानी कि पॉलिटिकल लाइफ भी रैशनैलिटी के आधार पर. और इकोनॉमी क्या हुआ? इकोनॉमी में द मिडिवल इकोनॉमी वाज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू मॉडल ऑफ इकोनॉमी विच इज नोन एज कैपिटलिज्म. तो ये 18th सेंचुरी तक आते आते सब पूरा आपका सोशल लाइफ, आपका पॉलिटिकल लाइफ और आपका इकोनॉमिक लाइफ किस आधार पे बिल्ड किया जाता है? रैशनैलिटी पे. अब रूसो को इस पे दिक्कत थी. क्या दिक्कत थी उनको? उन्होंने बोला कि दिस रैशनैलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग हैज मेड ह्यूमन बीइंग कंप्लीटली अ सेल्फिश ह्यूमन बीइंग.
because everybody, on the basis of one's own faculty of rationality, started thinking about one's own interest and became egoistic being. And Rousseau argued we lost our originality. According to Rousseau, human being by nature का मतलब है मूलतः, originally was a very sensitive animal, according to Rousseau. But when modern civilization emerged, ये सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक मैंने जो बताया रैशनैलिटी के आधार पे आता है, एंड रैशनैलिटी इज द बैकबोन ऑफ द मॉडर्न सिविलाइजेशन. रूसो बोलते हैं दिस मॉडर्न सिविलाइजेशन बेस्ड ऑन रैशनैलिटी हैज करप्टेड ह्यूमन बीइंग. दैट इज द आर्ग्यूमेंट. क्या किया है उसने? और उनका फेमस स्टेटमेंट है, आपको इथिक्स में और ऐसे में भी काम आएगा. थिंकिंग मैन अकॉर्डिंग टू रूसो इज अ डिप्रेव्ड एनिमल. नॉट डिप्राइव, डिप्रेव, PRAVED. डिप्रेव्ड का मतलब मॉरली करप्ट है. क्यों मॉरली करप्ट है? मतलब क्या है मॉरली करप्ट का मतलब? रूसो के हिसाब से बिकमिंग सेल्फिश, बिकमिंग सेल्फ सेंट्रिक, बिकमिंग इगोइस्टिक. अब बिकमिंग सेल्फ सेंट्रिक इगोइस्टिक का मतलब ही क्या है? कि वी स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट वंस ओन इंटरेस्ट. वी लॉस्ट द ओरिजिनल नेचर. क्या था हमारा नेचर? सेंसिटिव था. सेंसिटिव का मतलब क्या है मुझे बताइए? व्हाट इज मीन बाय सेंसिटिव? इवन एट ए प्राइमरी लेवल, इफ समथिंग रॉन्ग एंड बैड हैपेंस टू अदर्स, दैट influences and impacts us immediately, and we try to help the other, whoever he is. That is the sociability of the human being. That was the kind of sensitivity that human being originally known for. But ये सब इधर हुआ है. मॉडर्न सिविलाइजेशन जैसे आया, रैशनैलिटी एज इट बिकेम द बैकबोन ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ आवर सोशल लाइफ, ह्यूमन लाइफ, एवरीथिंग गॉट रॉटन. अब रूसो के सामने, इसीलिए रूसो इज सीन एज, अंडरस्टूड एज रिवोल्ट अगेंस्ट रीजन. क्या बोला जाता है उनको? रिवोल्ट अगेंस्ट रीजन. वो अब उसका कतई मतलब गलत मत निकालिए कि वाज रूसो अगेंस्ट रैशनैलिटी? डिड रूसो वांट टू अरेंज आवर रिलेशनशिप ऑन द बेसिस ऑफ इमोशंस एंड सेंटिमेंट्स? नो. व्हाट रूसो वाज एक्सपेक्टिंग वाज दिस, that look, we have rationality, but if we transform that into egoism, then we will become selfish and start thinking about one's own well-being at the cost of, at the disposal of the well-being of the others. ये ह्यूमन बीइंग ओरिजिनल नहीं है. इसीलिए उन्होंने आइडिया सामने रखा. उसके डिटेल की चर्चा हम डिटेल डिस्कशन बाद में करेंगे. जनरल विल. रूसो इज नोन फॉर जनरल विल. अब जनरल विल का मतलब सिंपल सा हम बताते हैं. अकॉर्डिंग टू रूसो देयर आर टू काइंड्स ऑफ विल्स possessed by human being. One is actual will. ये थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है. एक्चुअल विल, एक्चुअल का मतलब क्या है रूसो के हिसाब से? इट इज द विल विच अभी एग्जिस्ट है, वो वर्तमान है, वो अभी रियलिटी में है. एक. दूसरा, उसका नेचर क्या है? दिस एक्चुअल विल एज इट एग्जिस्ट इन द प्रेजेंट, नाउ it is selfish, self-centric and egoistic, short-sighted. Number one. Number two, but Rousseau argues there is another will. हम सब में है वो दूसरा विल. जो क्या है? उसको नाम दिया है रियल विल. अब बहुत बार हम एक्चुअल रियल इंटरचेंजेबली इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रूसो इज डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन द टू. एक्चुअल का मतलब जो अभी है, जो शॉर्ट साइटेड है, जो सेल्फिश है, जो इगोइस्टिक है, ओके, बहुत ही इनसेंसिटिव है. बट रियल विल उसके अपोजिट है. रियल विल का मतलब अल्ट्रुइस्टिक, सेंसिटिव, सोशल एंड लॉन्ग टर्म है वो. तो फिर रूसो बोलते हैं लेट अस एलिमिनेट, annihilate actual wills of all of us and let amongst all of us remain only one will, that is the real will. And when we collect the real wills of all of us, that is called as general will. So
General will is not will of the majority. General will is not will of all of us. It is neither majority will nor will of all of us, but rather it is will of all of us. But which will? Real will. ऑल ऑफ अस अगर बोलते हैं तो उसमें एक्चुअल भी आ सकता है ना, तो रूसो बोलते हैं ऑल अगर बोलते हैं तो उसमें एक्चुअल भी आएगा. तो जनरल विल इज विल ऑफ ऑल बट विच? द रियल विल. आई होप यू गॉट इट. हम हमारी जनरल कॉन्वर्सेशन में भी बहुत बार बोलते हैं ना, दो टाइप के इंसान होते हैं. आप वो छोड़ दीजिए, हमारे अंदर दो तरीके की इच्छाएं होती है, ऐसे हम बोल सकते हैं उसको. एक सही होती है, वो गलत होती है. ये कितनी बार हमने सुना है, पढ़ा है, बोला भी होगा. तो रूसो ये बात करते हैं. उसका मतलब ये है कि बाय नेचर ओरिजिनली ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल altruistic being, quite sensitive. But the moment human being enters the society, है ना, बाकी लोगों के सान्निध्यात येतो मराठीत मध्ये, म्हणजे then what happens? Gets corrupted. So human being has been corrupted because of the ecology, the kind of ecology we are part of. Even Gandhi used to say that by nature human being is, और ये human being का understanding बहुत काम आने वाला है. This is the best way to understand every Western political thinker, and we'll get back to that. मैंने खाली रूसो के बारे में. So उसका मतलब देखिए, अब Thomas Hobbes, let us conclude our discussion. Thomas Hobbes advocated state to bring back order and ensure safety of human life, but suggested prescribed absolute state with supreme power authority. John Locke prescribes accountable, responsible, and limited state with the role of preservation of the three natural rights: life, liberty, and property. And then comes the Rousseau. He also comes from the same social contract tradition, but argues that yes, the state is created by human being through the social contract, but ये जो state होगा ना, तो किस टाइप का state होगा according to Rousseau? It would be a state under the what? Guidance of the general will. It would be a state which would be what? Constituted by. So ये state किसी एक से नहीं बनेगा, ये state representative से भी नहीं बनेगा, उस स्टेट में सभी होंगे. Therefore, Rousseau is known as the advocate of direct democracy. किस डेमोक्रेसी की समर्थन वो करते हैं? डायरेक्ट डेमोक्रेसी. He wanted each one of us as part of the authority. Each one of us. अब आपको कंफ्यूजन लगेगा कि जनरली मॉडर्न पीरियड में हम जब गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं तो वी हैव थ्री ब्रांचेस: लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. तो क्या रूसो को तीनों जगहों पे सब चाहिए थे? नहीं. Legislature is very important for Rousseau, and he argued that legislature should be constituted by each one of us, not our representative. And he was, by the way, very critical of representative democracy as it was evolving in England. और उनका famous statement है रूसो का, the English people enjoys liberty once in 5 years on the day of election. वहां पे फेडरलिज्म नहीं है, सॉरी, हाँ फेडरलिज्म नहीं है, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट्स नहीं है वहां पे. हमारे यहाँ आप बोलेंगे नहीं सर 5 साल में तो 2-3 बार तो इलेक्शन डाल सकते हैं, वोट डाल सकते हैं हम. वैसा तो इंग्लैंड का नहीं. इंग्लैंड हैज अ यूनिटरी सिस्टम, बट वी आर अ फेडरल, वन स्टेट है वो. ओके. सो रूसो बीइंग अ वेरी स्टॉन्च क्रिटिक ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, उनका कहना यह था, नोबडी कैन रिप्रेजेंट एनीबडी एल्स. आई नीड टू बी रिप्रेजेंटेड माई सेल्फ इन द लेजिस्लेटिव बॉडी. सो जनरल विल कहां पे पर्सोनिफाई होगा, उसका मैनिफेस्टेशन कहां पे मिलेगा? लिटरल मैनिफेस्टेशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द लेजिस्लेचर. एंड ईच वन ऑफ अस शुड बी द मेंबर, बट इन व्हाट कैपेसिटी? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्चुअल विल या अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रियल विल? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द रियल विल, विच इज सेंसिटिव, विच इज सोशल, विच इज अल्ट्रिस्टिक और लॉन्ग टर्म है, वो शॉर्ट साइटेड नहीं है वो दैट इज द रियल विल. सो अब देखिए, तीनों सोशल कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट है, लेकिन हॉब्स किस टाइप का स्टेट बताते हैं, जॉन लॉक किस टाइप का स्टेट बताते हैं,
और रूसो किस टाइप का स्टेट बताते हैं उसमें डिफरेंस है, और वो डिटेल में हम बात करेंगे. नाउ लेट मी जस्ट रिवाइज माय आर्ग्यूमेंट दैट गार्नर की बात कर रहे थे हम. तो गार्नर ये डिफाइन करते, सॉरी ये कहते हैं पॉल साइंस का डेफिनेशन देते वक्त कि पॉल साइंस बिगिंस विथ स्टेट एंड एंड्स विथ स्टेट. आप प्लेटो के बारे में थोड़ा सा पता चला हमें, एरिस्टोटल के बारे में भी देखा, मैकेवली के बारे में, हॉब्स, लॉक एंड रूसो के बारे में. स्टेट, विदाउट स्टेट दे वी कांट, यानी कि एटलीस्ट दे, यानी कि फ्रॉम प्लेटो टू एटलीस्ट हम रूसो तक आए हैं. देन वी कम टू 19th century. And there are two philosophers, great philosophers from 19th century. One is John Stuart Mill. Again, John Stuart Mill again comes from England, but the period of 19th century, not the 18th century, yes, 17th century. And J.S. Mill is also a liberal one, a liberal thinker. Okay. And J.S. Mill, who was sort of born and brought up under the guidance of तालीम मराठीमध्ये जसं म्हणतो आपण, म्हणजे ऑफ जेरेमी बेंथम एंड हिज फादर जेम्स मिल. जॉन स्टुअर्ट के फादर जो जेम्स मिल, यूटिलिटेरियनिज्म, उसके बारे में बाद में हम डिस्कस करेंगे. नाउ बेंथम्स यूटिलिटेरियनिज्म आर्ग्यू दैट ह्यूमन बीइंग एज अ बीइंग इज अंडर द सॉवरेन, sorry, under the control of, under the regulation of two sovereign forces. Human being is under the regulation या control of two forces, जिसको sovereign बोलते हैं, supreme बोलते हैं. sovereign का मतलब यहाँ supreme है. कौन से दो forces है according to Bentham? Now he is here propounding his idea of the human being. So human being under the regulation and control and supreme what command of the two forces. और वो आंसर आप सबको पता है. one is the pleasure and other is the pain. मतलब क्या है, हम सबको पता है. we as human being, as a self-seeking animal who always thinks about one's own interest, try to gain pleasure and avoid pain. This is natural according to Bentham, and we will agree at least at one level. Okay, so this is one thing. And then he argues, since human being is under the two sovereign forces, pleasure and pain, and of the two, human being always look for gaining pleasure and avoiding pain. ये बात समझ में आई. तो फिर वो क्या करते हैं बेंथम? Once we understand this human nature, the central point and feature about human nature, यानी कि gaining pleasure and avoiding pain, what he argues that we can adopt this principle and apply it to larger society. और यहां पे उनका वो डिक्टम सामने आता है, greatest good of the greatest number, greatest pleasure of the greatest number. आप सिंपल करते हैं उसको. उसका मतलब क्या है? जस्ट कॉन्क्रीट एग्जांपल लेते हैं. there is a policy, and under that policy a project is being what constructed. So उसका डिजाइन हुआ है, so and so forth. And for example डैम, सरदार सरोवर का एग्जांपल लेते हैं. ओके, अब the government argued that the project, even if going to displace so many people, the project ultimately was going to benefit the majority of the people in terms of availability of water for drinking purposes, irrigation, for industrial use, what not. और उसके कितने spiraling effect अच्छे होते हो. Okay, so on what basis the project was sought to be justified? Interest of the majority. ये बेंथेमेट प्रिंसिपल है, टिपिकल बेंथेमेट आउटलुक है वो. But then those who were displaced, the Adivasis, most of them, they lost their land, forest cover, means of livelihood, and they obviously protested against the Narmada Dam. But again the argument was, okay, interest of the majority is to be safeguarded at the cost of the interest of the minority, and it was justified, and that is what the Benthamite logic
and modern democracies, all modern democracies including ours, operate on the basis of this Benthamite principle, greatest good of the greatest number. अगर कोई लॉ, अगर कोई पॉलिसी, अगर कोई प्रोजेक्ट, अगर कोई स्कीम मेजॉरिटी को इंटरेस्ट या बेनिफिट कर रही है तो उसको सही माना जाता है. दिस इज द लॉजिक ऑफ द मॉडर्न डेमोक्रेसीज. ओके, दूसरी बात, पहला था मैन ऑलवेज सीकिंग प्लेजर अवॉइडिंग पेन, नंबर वन, एंड नंबर टू, बेंथम अप्लाइंग दिस feature of human being to a larger collectivity and evolving his formula, greatest good of the greatest number, greatest pleasure of the greatest number. अब मानिए सिंपल सी भाषा में there are 100 people and there is a policy. If that policy, बेंथम क्या बोलेगा? If that policy benefits 51% people, 51 out of 100, वो बोलेगा अच्छा है. I hope you got it. ये उसका लॉजिक है. अब यहां पे वो काउंट क्या कर रहे हैं मुझे बताइए? नंबर्स आर बीइंग काउंटेड. अब उसी तालीम में जो पला बड़ा था वो जेएस मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, और ही डेयर टू क्वेश्चन हिज मास्टर. ओके, और उन्होंने कहा कि नहीं, ह्यूमन बीइंग इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल. नाउ इन व्हाट सेंस डिफरेंट? Mill argued, J.S. Mill, now when I say Mill, it is J.S. Mill. He argued that human being does not think of pleasure in terms of quantity, but human being, because of a particular nature, we'll look into that, thinks about pleasure in qualitative terms. Now, say for example, the simplest example, if the kind of human being that J.S. Mill thought of has 100 rupees and somebody else is there who requires something 20-30 rupees. अब चॉइस क्या है उसके पास, जिसके पास 100 rupees है? तो either to help out the other by giving what 20-30 rupees, otherwise he will say no, I need 100 rupees, so I have to take a meal and then watch movies, whatever it is. नहीं. अब मिल का कहना यह था, ह्यूमन बीइंग इज दैट काइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग, सॉरी, दैट काइंड ऑफ बीइंग, दैट काइंड ऑफ एनिमल who has the ability, who has the character to go beyond one's own self-centric what needs and attitudes, and has the ability to help others even at the cost of one's own pleasure. और उसमें से जो उसको प्लेजर मिलेगा, उन्होंने आप वर्ड इस्तेमाल किया है हैप्पीनेस. द काइंड ऑफ हैप्पीनेस दैट ह्यूमन बीइंग गेन्स पॉसिबली बाय हेल्पिंग अदर्स, दैट इज फार ग्रेटर देन द न्यूमेरिकल क्वांटिटेटिव प्लेजर विच इज एडवोकेटेड एंड सपोर्टेड बाय जेरेमी बेंथम. सो जेएस मिल का अंडरस्टैंडिंग अलग ही था. ओके, सो अब इतना ही हम करते हैं जेएस मिल के बारे में. नाउ वो जेएस मिल is famous for his till date staunchest justification of individual liberty, liberty of thought and liberty of thought and expression, number one, and liberty of action. And on liberty is the work which is still known as the great work on human liberty. तो वो दूसरी चीज है what about J.S. Mill. Now, what J.S. Mill does here, now he comes from the tradition of liberalism, but he humanizes liberalism because he pulls human being from the trap of Bentham. He pulls human being out from the self-centric kind of conception of human being that Jeremy Bentham had thought of. तो बोलते कि नहीं, वो सेंसिटिव है, दूसरों को हेल्प करता है का मतलब क्या है? सेंसिटिव है. और यहाँ फेमस स्टेटमेंट है उसका, J.S. Mill का, it is better to be a Socrates dissatisfied than a fool satisfied. वो दोनों में अंतर कर रहा है. On one hand we have Socrates and on the other hand we have pig or fool. जो pig और fool है ना, उसके लिए प्लेजर का मतलब क्वांटिटेटिव प्लेजर है,
उसको क्वालिटी ऑफ प्लेजर पता ही नहीं है, बिकॉज ही हैपन्स टू बी फूल, ही हैपन्स टू बी अ पिग. But Socrates is that human being, that kind of human being, represents the human tendency which always seeks to set qualitative pleasure aside from the quantitative one. वो सॉक्रेटिस सिंबल है उसका. तो वो प्रिफर क्या करेगा सॉक्रेटिस? फिर डिससेटिस्फाई रहना प्रिफर करेगा, because he is not running after quantitative pleasures. Rather, Socrates, like human being, is looking for qualitative pleasures. So that's very, very interesting on part of J.S. Mill. अब ये J.S. Mill last मुद्दा. J.S. Mill advocates, supports, and builds a very strong argument for representative form of government. ये उसका दूसरा क्लासिकल वर्क है. So he supports state, but what kind of state? Democratic state. अब 19th century में है हम. ओके, वो रिप्रेजेंटेटिव बोलता है, वो डेमोक्रेटिक स्टेट बोलता है. ये दो तीन चीजें जेएस मिल के. एंड देन कम्स द फिलोसोफर ऑफ द 19th century, दैट इज कार्ल मार्क्स. ओके, नाउ मार्क्स criticizes the entire tradition of liberalism which was put forward by John Locke, then carried it forward by and developed by J.S. Mill and so many others. So he criticizes liberalism, criticizes John Locke, criticizes capitalism. Okay, बाकी डिटेल्स हम बाद में देखेंगे. अब उस पे जाना है हमें. Now Karl Marx is that first thinker as far as our syllabus formally speaking is concerned. syllabus के बारे में हम बोल रहे हैं. That first thinker from the syllabus of Paul Science, from the galaxy of Western political thinkers, who argued, okay, that, और ये खाली आर्गुमेंट नहीं था, पहला आर्गुमेंट नहीं था, दूसरा आर्गुमेंट है. He analyzed human history and pointed out that, brought to our notice that there were human societies in ancient past which did not have state. Okay, and then स्टोरीज ऐसे फास्ट फॉरवर्ड करते हैं ना, तो आगे जाते हैं. He imagined of the ideal order, the ideal system of his imagination as the communist society which is characterized by classless, और दूसरा आता है stateless. जो हमने शुरू में आंसर दिया ना, अब गार्नर का क्या है, पंक्चर ही कर रहा है मार्क्स. तो गार्नर आर्ग्यूज Paul science begins with state and Paul science ends with state. Now for Plato, state is very important. For Aristotle, state is important because for both of them, human being has the goal of good life. And without state, good life is not possible for Plato as well as Aristotle. Machiavelli, in his own context of a fragmented Italy, identify the need of the state, the monarchy. Then comes Thomas Hobbes, again in the context of civil war in England, identifies the need of a definite human association called as the state. Then comes Locke, proposes accountable, responsible and limited state. And then comes Rousseau as a revolt against the reason. उसको पंक्चर ही करता है. रूसो एक तरीके से पंक्चर कर रहा है वो. आप देखिए उसके दो एक स्टेटमेंट मैंने कहा रूसो का. थिंकिंग मैन इज अ डिप्रेव्ड एनिमल. सिंपल सी भाषा में, थिंकिंग मैन इज अ मॉरली करप्ट एनिमल. आपको लगेगा सर का इलिटरेट रहना चाहिए क्या? थिंकिंग मैन इज, बट थिंकिंग का और एजुकेशन का कितना संबंध है हम सबको पता है. ओके, विदाउट बीइंग एजुकेटेड वी कैन कीप ऑन थिंकिंग, नो डाउट अबाउट दैट. और दूसरा उनका स्टेटमेंट है, काफी फेमस है रूसो का, मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर इन चेन्स. है ना? देन जेएस मिल 19th century में वो भी स्टेट का जरूरत बताते हैं, बट क्या टाइप का स्टेट वो बताते हैं? बीइंग अ लिबरल, बीइंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ लिबरल, मॉडर्न लिबरल, बाद में देखेंगे. रिप्रेजेंटेटिव स्टेट एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ स्टेट को जस्टिफाई करते हैं. एंड कम्स कार्ल मार्क्स. कार्ल मार्क्स सॉर्ट ऑफ revolts against all ideas and value systems that existed at his time during 19th century. एक लिबरलिज्म का था जिन्होंने ह्यूमन बीइंग को रैशनल कहा, डिमांडेड फ्री सोसाइटी ऑफ फ्री इंडिविजुअल्स,
looked at state as a necessary institution but limited accountable, an umpire like state, limited state. Capitalism आया, free market economy, Adam Smith and so on and so forth. So Marx questions everything. And बाकी भी बहुत सारे आइडियोलॉजिकल करंट थे, वो बाद में हम देखेंगे. ओके, अब व्हाट इज द बेसिक आर्गुमेंट ऑफ मार्क्स हियर एट अ वेरी प्राइमरी लेवल, बाद में वो टर्मिनोलॉजी बाकी सब चीजें देखेंगे. नो, मार्क्स presents a very important issue या concern of the humanity. And what is that concern? How to free oneself from the exploitation. And the exploitation was not happening just in modern period in capitalism, but Marx takes us back to feudal era, medieval era, Middle Ages, and agricultural mode of production था. Then again he takes us back, further back to the slavery, कि जहां पे मास्टर स्लेव का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे. एंड देन द फर्स्ट फेज इन द ह्यूमन बीइंग विच इज नोन एज प्रिमिटिव कम्युनिज्म, है ना, वो तो अलग, यानी कि इट वाज अ प्रिमिटिव कम्युनिस्ट फेज, नो क्लासेस, नो स्टेट, बट उसको हटाते अभी. स्लेवरी, फ्यूडलिज्म एंड कैपिटलिज्म. इन एवरी ह्यूमन फेज फ्रॉम स्लेवरी टू कैपिटलिज्म, exploitation was the hallmark of the human society. So there existed two major classes: masters, slaves in slavery, then landlords and serfs in feudalism, and bourgeoisie या capitalist class and workers या proletariat in capitalism. One was the dominant, the haves, which owned the major means of production in the respective economic system. So in capitalism, capital is the major, main means of production. मेन वो है. आपको मशीन खरीदना है, कैपिटल लगेगा. आपको लैंड खरीदना है, कैपिटल लगेगा. आपको कुछ भी खरीदना है, लेबर खरीदना है, तो आपको कैपिटल चाहिए. सो कैपिटल इज द मेन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. इसीलिए तो उसका नाम क्या है, कैपिटलिज्म, है ना. फ्यूडलिज्म में लैंड है. स्लेवरी, स्लेव इज द मेजर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. सो since they own the major means of production, they are haves, they are the owners, and they are in a position to exploit the have-nots. अब वर्कर के पास क्या है? वर्कर के पास एक ही ऑप्शन है, whether to be exploited by अदानी या अंबानी या बिरला या टाटा या और कुछ भी कहिए. That is the only choice, है ना. आप एडम स्मिथ ने कहा था कि नहीं, लेबर्स आर, वर्कर्स आर फ्री, यू कैन चूज वेर एवर यू वांट. मार्क्स ने कहा ये क्या टाइप का चॉइस है, यानी कि किससे एक्सप्लॉयटेशन करवाना है, इतना ही मेरा चॉइस है. सो एक्सप्लॉयटेशन, ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन, he brings that right at the center, number one. Number two, and then and this is a very important contribution by Marx. अब देखिए, जॉन लॉक की बात हमने की. लॉक ने नेचुरल राइट्स की आइडिया बताई थी. 3 नेचुरल राइट्स की वो बात करता है, लाइफ, लिबर्टी एंड, ऑफ द 3 लिबर्टी इज द सेकंड वन. लिबर्टी का मतलब फ्री स्पेस. सो अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक, लिबर्टी इज अ नेचुरल राइट, intrinsic part of human being, because according to John Locke, being a liberal, human being is a rational individual, has the faculty to think rationally, and has the ability to do whatever is essential in order to safeguard one's own interest. So capability का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लेम लॉक करते हैं, लिबरलिज्म करता है, क्योंकि लिबरलिज्म के हिसाब से, लॉक के हिसाब से, ह्यूमन बीइंग इज अ रैशनल बीइंग, यानी कि इन पोजेशन ऑफ द कैपेसिटी. तो फिर चाहिए क्या उसको? तो बोलते हैं लिबर्टी चाहिए. लिबर्टी का मतलब क्या है? फ्री स्पेस. इफ इंडिविजुअल इज रैशनल, केपेबल, able to think and act upon, then that individual, that kind of rational individual, according to liberalism, including John Locke, requires freedom, requires liberty. And what is liberty, freedom here? Free space. Let him, her do whatever he, she wants to do. ये फ्रीडम का कॉन्सेप्ट वो लिबरलिज्म बताता है. नाउ मार्क्स एंटर्स द सीन and argues that to have one's own state, to have a representative state, to have constitutionally provided rights and liberty is not at all freedom. हम मानते हैं 15 अगस्त 47 को हमारा एक इंडिपेंडेंट नेशन करके जन्म हुआ.
वो बोलते काय का जन्म है वो, दैट इज अ बुर्जुआ रेवोल्यूशन. दैट इज हाउ मार्क्स वुड आर्ग्यू दैट. Then we can ask a simple question. I'm not using the terminology. What is real freedom? Now, Marx uses the concept human emancipation. और आपको वो क्लू मिल गया होगा. As long as we have exploitation in human society, we cannot talk of freedom, liberty in real sense of the term. या इसीलिए तो वो कम्युनिज्म की बात करते हैं, जिसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं. कम्युनिज्म वुड बी अ क्लासलेस सोसाइटी. क्लासेस नहीं होंगे. व्हाई डू वी हैव क्लासेस इन सोसाइटी? बिकॉज द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड प्राइवेटली. The means of production are owned privately. Now, who owned slaves during slavery? The masters. Who owned land, agriculture as the major means of production during medieval period? The landlords. Who owns capital as the major means of production in capitalism? The capitalists. Own. यानी कि बुर्जुआजी, जिसको बुर्जुआ बोला गया है, कैपिटल. सो दे आर द हैव्स. दे आर द डोमिनेंट सेक्शन, द क्लास, द हैव्स of the respective phase. फिर मतलब उसका ये है, according to Marx, we are going to have exploitation as long as we have the institution of private property. As long as we have institution of private property. जब तक private property का institution रहेगा, तब तक समाज में क्या होंगे मुझे बताइए? क्लासेस होने वाले हैं. दो मेन क्लासेस होने वाले हैं, उससे भी ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन दो मेन हैं, हैव्स एंड हैव नॉट्स है. And haves would always be in a position to exploit the have-nots. And that exploitation shall continue. अब देखिए, the capitalist by giving workers would earn surplus value. They would then invest in some other venture, keep on exploiting the workers by giving them just meager wages to sustain their daily life. ये vicious cycle चलता रहेगा. Okay. तो इसीलिए वो बात करते हैं कि एक्सप्लॉयटेशन एंड ह्यूमन इमेंसिपेशन. सो एज लॉन्ग एज वी हैव इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, वी आर गोइंग टू हैव क्लासेस. एंड एज लॉन्ग एज वी हैव क्लास, अब वो उसका इंटरवेंशन आता है मार्क्स का. एज लॉन्ग एज वी हैव क्लासेस, एज लॉन्ग एज वी हैव प्रॉपर्टी एंड क्लासेस, वी आर गोइंग टू हैव क्लास स्ट्रगल. अब क्लास स्ट्रगल का मतलब लिटरली मत लीजिए, यानी कि एक दूसरे से झगड़ रहा है, ये भी मतलब होता है ना. तो यहां मतलब है one class having exactly antithetical relationship with the other. इंटरेस्ट के बारे में. सो मुझे बताइए, कैपिटलिस्ट का इंटरेस्ट क्या है? ज्यादा प्रॉफिट कमाना. और वर्कर का इंटरेस्ट क्या है? बेटर वेजेस हमको लगेगा, है ना. लेकिन उसको सही में अगर पूछे आपने, तो बोलेगा कि मेरा जो वर्क है, मेरा जो लेबर है, सिंपल सी भाषा में उसका सही दाम मिलना चाहिए. और मार्क्स कहते हैं कैपिटलिज्म में कतई नहीं हो सकता है, ये कभी भी नहीं हो सकता है वो. बिकॉज कैपिटलिज्म एंड क्लास कैपिटलिस्ट इज ऑलवेज मोटिवेटेड बाय अर्निंग प्रॉफिट. एंड द ओनली मेथड ऑफ इंश्योरिंग दैट इज टू गिव सब्सिस्टेंस वेज टू द वर्कर्स. मीगर है, निग्लिजिबल है. बाद में वो सरप्लस वैल्यू का कॉन्सेप्ट हम बताएंगे. ओके. तो जब तक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तब तक समाज में क्लासेस होंगे. जब तक समाज में क्लासेस है, तो क्लास कॉन्ट्रडिक्शन होगा, यानी कि एनिमिकल रिलेशनशिप है. एक का है ये एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम सस्टेन करना, और दूसरे का है इस सिस्टम को खत्म करना. ओके. अब उसका इंटरवेंशन आता है. तब तक स्टेट रहेगा. अब आपको सरप्राइजिंग लगेगा ये. सो मार्क्स के हिसाब से इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट का होना ह्यूमन सोसाइटी में, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है the society has institution of private property. The society has two major classes. There is contradictory, antithetical, conflictual relationship between two classes. One class is exploiting the other. उसका मतलब है आपके समाज में शोषण है. स्टेट है का मतलब शोषण है. स्टेट है का मतलब क्या है? स्टेट है का मतलब अनफ्रीडम है. स्टेट है का मतलब सपरेशन है. स्टेट है का मतलब कोअर्शन है. स्टेट है का मतलब, बट दैट इज द अप्रोप्रिएट वर्ड दैट ही यूजेस, एक्सप्लॉयटेशन है. आप पॉल साइंस को उल्टा पुल्टा कर रहे हो. कम्युनिज्म में बोलते हैं कि स्टेट ही नहीं चाहिए,
क्योंकि मार्क्स के हिसाब से स्टेट का होना यानी कि एक्सप्लॉयटेशन का होना है। इसीलिए कम्युनिज्म इज एन एक्सप्लॉयटेशन लेस सोसाइटी है ना, तो उसमें क्लासेस भी नहीं होनी चाहिए और स्टेट भी नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये मानना ही नहीं मानना ये हम पे रहेगा ये, लेकिन लुक एट हाउ ही, सो ही एंगेजेस विथ स्टेट इन अ वेरी क्रिटिकल मैनर। और उसका फेमस स्टेटमेंट है, स्टेट इज नथिंग बट अ प्लेथिंग एन इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ हैव्स। A state is nothing but a plaything, an instrument, a means in the hands of haves. अब उसका सिंपल सा मतलब कैसे लगाइए आप? Who are the haves? Haves are those who own in today's times capital. Okay. And if you look at the kind of power the capital enjoys, उसका हम इमेजिनेशन भी करने नहीं कर सकते कितना पावर उसके पास है। It is because of the possession of capital, the ownership of the capital. Look at the economic power. और फिर मार्क्स बोलते हैं कि ये जो इकोनॉमिक पावर होती है ना हैव्स के पास, तो दैट पावर डज नॉट रिमेन लिमिटेड टू ओनली इकोनॉमी, इट डज स्प्रेड अक्रॉस द अदर वॉक्स ऑफ लाइफ। तो इसीलिए तो हमें टीवी चाहिए, टीवी चाहिए का मतलब चैनल्स चाहिए, सॉरी टीवी नहीं चैनल चाहिए। सो व्हाई डू वी द कॉर्पोरेट, व्हाई डज कॉर्पोरेट सेक्टर इंडिया केम टू ओन सो मेनी चैनल्स? अब एनडीटीवी किसके पास है हम सबको पता है, टीवी 18 नेटवर्क किसका कौन मालिक है उनका ये भी पता है। अब ऐसा है क्या, मुझे बताइए कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बहुत प्रॉफिट मिलता है सर इसीलिए उन्होंने लिया है? बिल्कुल नहीं, दे आर इन लॉसेस, कुछ नहीं उसमें। बट डिस्पाइट दैट इकोनॉमिक लॉस they are continuing with the channels because they know for sure that electronic channels are 24 into 7 है वो, so they create artificial needs, है ना, they get into mass production, mass scale production, and they convert us into a permanent consumer. आपने ऐड पढ़ा है, और दिखाओ और दिखाओ और दिखाओ, क्या है? This is how we are on daily basis, every moment transform into a consumer. क्रिटिकली देखते हैं उस तरफ, वो क्रिटिकली देखते हैं। सो दैट इज कार्ल मार्क्स। ओके, एंड देन वी कम टू 20th सेंचुरी। एक सर्वे होगा हमारा पॉल साइंस का। वी हैव टू अगेन वेरी फेमस थिंकर्स। वन इज ग्रामशी, who comes from the same tradition of Marxism but engages with Marxism in a critical manner. Now आपको सरप्राइजिंग लगेगा, when he was 7 years old, his father, who was a public servant, alleged for a certain corrupt act, lost what? The means of livelihood, lost the job, and we get to see a break in his what? The education, primary education कर रहे थे वो, 7 साल का मतलब क्या करता होगा? But then started earning on his own, sustained his family, and won a scholarship. Okay, he was from Italy, Sardinia, the southern part of the Italy. Okay, and for the first time he saw the North Italy, क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी में उसको स्कॉलरशिप मिला था, दैट इज द तुरिन यूनिवर्सिटी। एंड तुरिन इज नोन फॉर, आप गूगल करके देख सकते हो, इज नोन फॉर द फैक्ट्री ऑफ द फियाट। फियाट फैक्ट्री का प्लेस है वो, तुरिन, तुरिन है। पहली बार देखा था उसने, क्योंकि सदर्न जो इटली था ना, इट वॉज फ्यूडल, पीजेंट्री वॉज देयर, और जैसे वो वाला होता है, तो वैसे सुपरस्टिशंस, कस्टम्स, एंड देन कैथलिक चर्च का बहुत ही डीप रूटेड इंपैक्ट था सदर्न पार्ट ऑफ द इटली। और नॉर्दर्न जो था वो इंडस्ट्रियली डेवलप्ड था वो, और पहली बार वो देखता है। यूड बी, ही वॉज डूइंग, सॉरी, ही वॉज परसिविंग ग्रेजुएशन इन आर्ट्स एंड लिटरेचर। ओके, उसमें चल रहा था उनका। एंड देन ही इमीडिएटली गेट्स इन्वॉल्व इनटू एक्टिव पॉलिटिक्स, and he joins the working class movement and the Italian Socialist Party. Okay, but then deeply dissatisfied with the program of the Italian Socialist Party, and becomes, so he leaves the Socialist Party, and he becomes one of the founder member of the Italian Communist Party. ये एक तरफ हो रहा था।
और बहुत सारी चीजें हो रही थी. I'll cut it short. And then on the other hand, in the beginning of the 20s, the decade of 20s, Mussolini rises on the scene, captures power through the democratic elections, and suspends everything in Italy. Everything, सब कुछ. बाकी पार्टी को बैन करते हैं, पूरा मिलिट्री उनके हाथ में जाता है, सब सब सिविल सर्विस, ये सब 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 चला गया. इलेक्शन हुआ, वो आए, बात खत्म. दैट वाज अ fascist state. And immediately Gramsci is imprisoned, and he, अब ये हुआ था 1926 में, ओके, और 1937 तक वो प्रिजन में थे. अब क्या एज था देखिए, और ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला था. हम अगर ऐसा करते तो घरचे मारून घरी घेऊन जातील आपल्याला, म्हणजे काय चाललंय तुझं म्हणून, म्हणजे. ओके, सो and when he was in prison, he wrote on regular basis, and that work subsequently was published as prison notebooks. अब अगर हमें 1-2 दिन जेल जाना पड़ेगा, क्या होगा पता नहीं हमारा, लेकिन उसने, और वो भी देखिए, ये दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, ही रोट इन सच ए वे. अब वो क्यों करना था वो भी मैं बताता हूं आपको. एवरी डे, every piece of writing was closely scrutinized by the jailers, by the jail administration. और उसको ट्रिक क्या करना पड़ा पता है कि आपको, उसको समझ में ना आए इस तरीके से लिखा है उसने. बहुत स्कॉलर्स में उसमें काम किया है. तो दैट ग्रामशी, ये बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है उसका. ही डाइज इन बैड हेल्थ. ओके, ये सब हुआ है, लेकिन वेरी लैंडमार्क. And by the way, Gramsci is known as the second important figure in the tradition of Marxism after Karl Marx. So he engages with Karl Marx critically, and sort of a very rigid kind of Marxism, which was around the corner in 20th century, जब Gramsci ये कर रहे थे. तो वो Gramsci, this is very important. अब मार्क्स ने कैपिटलिज्म का एनालिसिस किया था, और वो बोलते हैं कि देखिए, जिनके पास कैपिटल की ओनरशिप है वो डोमिनेंट क्लास हैव्स है, और वो एक्सप्लॉइट करते रहेगा. और उन्हें ये भी कहा मार्क्स ने, वो ज्यादा मैंने नहीं कहा आपको, कि कैपिटलिज्म विल ग्रो इंक्रीजिंगली एक्सप्लॉइटेटिव. दैट एक्सप्लॉइटेशन वुड रीच अनबेरेबल लेवल, सैचुरेशन बोलेंगे उसको. इट बिकम्स सो अनबियरेबल फॉर द वर्कर्स दैट दे वुड यूनाइट all over the world, okay, and they will bring down capitalism. This is known as inevitability of revolution in capitalism. किस चीज से वजह से होने वाला है? Because capitalism going to grow exploitative. यानी कि कैपिटलिज्म में एक्सप्लॉइटेशन बढ़ेगा, वो उस हद तक जाएगा कि जैसे हमारे यहाँ 1857 जैसे हुआ है, कहीं भी होता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन जैसे हुआ था, आज जो चल रहा है वो भी वैसे है एक तरीके से देखा जाए तो. इफ नॉट दैट काइंड ऑफ रेवोल्यूशन, बट कुछ ना कुछ तो डिससेटिस्फैक्शन है ना. तो ऐसे लेवल को जाएगा कि वो इकट्ठा होकर उसको नीचे गिरा देंगे, और दे विल टेक चार्ज ऑफ द अफेयर्स. तो ये मार्क्स का एनालिसिस था कि कैपिटलिज्म ऐसे काम करेगा कि उसके डायनेमिज्म, और उसका फेमस स्टेटमेंट भी है मार्क्स का कि कैपिटलिज्म बिगिंस टू डिग इट्स ओन ग्रेव. वो खुद की ही ग्रेव शुरू करता है वो. तो अब वैसे नहीं हुआ. जो मार्क्स ने रेवोल्यूशन होगा ऐसा बताया, तो कहीं भी यूरोप में नहीं हुआ जहां पे कैपिटलिज्म थी, कैपिटलिज्म सिस्टम था. वो हुआ कहां पे? 1917 में रशिया में हुआ, कि जो इंडस्ट्रियली डेवलप्ड नहीं था, जहां पे कैपिटलिज्म की ग्रोथ नहीं हुई थी उतनी जितनी बाकी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में हुई थी. तो ग्रामशी एंगेजेस विद दैट फिनोमेना वेरी क्रिटिकली, इन अ वेरी रिफ्लेक्टिव मैनर. और वो बताते हैं कि देखिए, इकोनॉमिक फोर्सेस आर इंपॉर्टेंट, है ना, क्योंकि उसमें आपके पास रिसोर्सेस है, आपके पास बहुत सारी ताकत होती है, वो ठीक है. बट देयर इज अनदर फॉर्म ऑफ पावर. ये हुआ इकोनॉमिक पावर, कोर्सिव पावर, मिलिट्री पावर, ये अलग अलग फॉर्म के पावर है. लेकिन ग्रामशी बोलते हैं कि नन ऑफ द मेन स्ट्रीम कैपिटलिस्ट सिस्टम्स एंड सोसाइटीज इन यूरोप विटनेस रेवोल्यूशन, वर्कर्स रेवोल्यूशन, बिकॉज capitalism was sustained in those societies not through coercive force of the state or some sort of military force, but capitalism all across world, especially European world, was sustained
preserved through a very distinctive form of power. और वो फॉर्म ऑफ पावर क्या है? तो ग्रामशी उसको नाम देते हैं हेजीमनी. और हेजीमनी का मतलब क्या है? कल्चरल, आइडियोलॉजिकल, इंटेलेक्चुअल पावर. जो आईटी सेल कर रहा है ना. आप, दैट्स अ बैड कंपैरिजन. हेजीमनी कुछ अलग बात है, उसके बाद जाते, जस्ट मैंने रेफरेंस दिया. नाउ व्हाट इज, सो हेजीमनी इज, आप देखिए इन लास्ट 40 ईयर्स, ये टर्म के बाद छोड़ दीजिए, यानी कि 2010 के बाद छोड़ दीजिए, अमेरिका का स्टोरी क्या है. गेट बैक टू 2007-8, यानी कि बैक बैक जाइए, उसके पहले जाइए. अमेरिका was the hegemon. But how did America establish its hegemony? Was it through the military means? Was it through only the economic means? Cultural means. है ना. मीडिया आया, सब कुछ आया, हमें पता है वो, है ना. तो कल्चरल मीन्स, सो हेजेमनी इज अ कल्चरल फॉर्म ऑफ पावर. और उसका सबसे व्हाट बैड है, लेकिन गुड भी मैं कहूंगा उसको अलग तरीके से, उसको द कास्ट इन इंडिया. कास्ट हेजेमनी है वो. हाँ, पढ़ते हैं कि हम क्लास में, स्कूल में पढ़ाया जाता है कि हमें कि कास्ट ऐसा होता है, वो हमें फॉलो करना चाहिए. कौन बताता है हमें? लुक एट द इन्फ्लुएंस ऑफ दैट. किसने शास्त्र पढ़ा होता है? एक हाथ दूसरा होगा. किसको क्या आता है ना, वैसे ही वो. लुक एट द कल्चरल इन्फ्लुएंस ऑफ दैट. मगरमीठ म्हणतात ना मराठीमध्ये, मगरमीठ. मगरीची मीठ असते, तसा प्रकार आहे तो म्हणजे. सो कास्ट, बट छोड़ दीजिए उसको, अमेरिका का एग्जांपल लेते. सो अमेरिका एस्टैब्लिश इट्स हेजेमनी थ्रू कल्चरल मीन्स. म्यूजिक देखिए कैसे आया है वो, सब कुछ देखिए वो. सो कल्चरल, सो ग्रामशी आर्ग्यू that capitalism could sustain without a revolution because capitalists have and capitalist system have invented cultural form of power. और कल्चरल फॉर्म ऑफ पावर का पिक्युलरिटी क्या होता है? क्या होता है उसका पिक्युलरिटी? इट इज नॉट इम्पोज्ड ऑन अस कोर्सिवली, बट वी एक्सेप्ट इट. किसको बोला है आपने अमेजॉन खोलने के लिए? किसको बोला है आपने कि अर्णव गोस्वामी कुछ तो बता रहा है या दूसरी बात बता रही है, हम उसको सुने? किसने बोला है आपको? यू ओपन अप योर इडियट बॉक्स, यू स्टार्टेड वॉचिंग योर चैनल, लेकिन उसका असर होता है ना हम पे. इफ वी डू नॉट अप्लाई अवर क्रिटिकल माइंड, तो हमें लगता है कि हाँ ये सही है. सो आइडियाज आर फ्लोटेड अराउंड अस एंड वी स्टार्ट बिलीविंग इन दोज आइडियाज. सो दिस इज हाउ द कल्चर, सिविल सोसाइटी and so many organizations of civil society are used, that is what Gramsci argued, to create and craft that hegemony. And we are made to believe that the existing system is the best of best system. और वो एक्सप्लॉयटेशन है, एक्सप्लॉयटेटिव है, वो हम भूल जाते हैं. आई होप यू गॉट इट. दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन बाय ग्रामशी. इसलिए वो बोलते हैं कि ऐसे अपने आप रेवोल्यूशन नहीं होगा, नहीं होने वाला है, क्योंकि कैपिटलिज्म में एक्सप्लॉयटेशन है, लेकिन उस एक्सप्लॉयटेशन को उन्होंने क्या किया है? शुगर कोट किया है. सिंपल सी भाषा में शुगर कोट किया है. और वो शुगर कोट क्या, किस तरीके से किया जाता है? आप म्यूजिक देखिए, आप सिनेमा देखिए, मूवीज देखिए, आप लिटरेचर देखिए, कोई भी निकाल के देखिए, सब कुछ, खाने का, पीने का, रहने का ढंग, सब कुछ बदलता है. एंड दैट इज हाउ we come under the influence of cultural influence of the capitalist society. ये ग्रामशी का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है. ओके. एंड देन कम्स द ओनली वुमन थिंकर in the entire galaxy of Western political thinker, Hannah Arendt. Now, Hannah Arendt, in a sense, was contemporary of Gramsci, but Gramsci dies in 1937. Hannah Arendt बहुत सालों तक है, यानी कि जो decade of 70 है almost. But she was badly hit by the Nazi regime, कि जो एक दशक बाद आता है in Germany, 1933. Okay, so the beginning of 20s in Italy and the beginning of 30s in Germany. So she was Hannah Arendt was a German Jew. Okay,
and she was victim of the Nazi atrocities and genocide. She could save herself, okay, and flee to USA. But while doing that, she did a great job. She saved number of Jews, very active, very एक्टिव, एब्सोल्युटली एक्टिव. वो भी बाद में हम, क्योंकि हर एक थिंकर का जो एक थोड़ा बायोग्राफी है ना, वो इतना इंस्पायरिंग है, वो बहुत ही इंस्पायरिंग है. तो वो हैना अरेंट है. अब हैना अरेंट इन अ सेंस क्वेश्चंस all mainstream ideas from Paul science. She questions the idea of power. She questions the idea of politics. She questions the idea of the political system. She questions the idea of human liberty and freedom. Everything. पावर को क्वेश्चन करती है, पॉलिटिक्स को क्वेश्चन करती है, लिबर्टी को क्वेश्चन करती है. जैसे वो अब वो बाद में डिस्कस करेंगे ना कि लिबरलिज्म का कहना क्या था लिबर्टी के बारे में, देन सोशलिज्म क्या कहता है, मार्क्सिज्म क्या कहता है, सो एन एंड सो फोर्थ. सो अब एक ही मैं उनका एक्सप्लेनेशन देता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग है. शी आर्ग्यूज दैट ह्यूमन बीइंग does take up three kinds of acts. One is labor, like any other animal in this planet, on this planet, in natural order. हम खाते हैं, पानी पीते हैं, सोते हैं, फिर खाते हैं. वो ऐसा जब तक हम जिंदा है तब तक वो करते हैं, और वो करना ही पड़ेगा हमें. यानी कि वी हियर अटेंड टू आवर बायोलॉजिकल नीड्स, एनिमल लाइक नीड्स है. कुछ बचता नहीं है, प्रोड्यूस करते, खाते, काम खत्म, फिर से शुरू होता है वो सिलसिला. वो कुछ उसमें से कंस्ट्रक्टिव क्रिएटिव कुछ नहीं होता है, बिकॉज हियर वी एक्ट लाइक एनी अदर एनिमल, एनी अदर लिविंग स्पीसीज. ओके. उसके बाद आता है वर्क. दूसरा एक्ट जो इंसान करता है, ह्यूमन बीइंग करता है, अकॉर्डिंग टू हैना अरेंट, दैट इज द वर्क. नाउ व्हाट डू वी डू इन वर्क या थ्रू वर्क? हैना अरेंट आर्ग्यूज that we use raw material from the nature, we mix our labor, we work upon the raw material, and we create things. Now, this is a thing. This is a thing. This is a thing. These are things. Chair hai, table hai, desk hai, so on and so forth. Now, the things are those products of human work. This is the natija of the human work, not the labor. Labor is the primary one. Now we are talking about the work, wherein we mix up our labor in the raw material and we create things, produce things. These things are produced by human being to make one's own life comfortable. क्या उसका पर्पस क्या है? मेकिंग आवर लाइफ कंफर्टेबल, है ना. नीचे बैठने से अच्छा है कि डेस्क पे बैठे, सो एंड सो फॉर, वी नो फॉर श्योर. बट वो आर्ग्यू करती है बोथ लेबर एंड वर्क एज ह्यूमन एक्ट आर नॉट स्टिल यूनिकली ह्यूमन. दे आर स्टिल लाइक एनी अदर एनिमल. दे डू नॉट मैनिफेस्ट द मार्क ऑफ द हॉलमार्क ऑफ द ह्यूमन बीइंग, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हर both acts, labor as well as work, are essentially done by us as human being for one's own cause. यानी कि in order to protect one's own life and preserve one's own interest. मैं खाता हूं, सोता हूं, किस चीज के लिए? क्योंकि मुझे जिंदा रहना. सिंपल सी भाषा में. मैं चीजें बनाता हूं किस लिए? मेरा लाइफ कंफर्ट करने के लिए, कंफर्टेबल करने के लिए. यानी कि कंसर्न इज प्राइवेट, concern is personal, है ना. concern is narrow, and then comes the last human act, third one, जिसको उन्होंने नाम दिया है एक्शन. एक्शन का मतलब थोड़ा हिंट मिला होगा आपको. what is mean by human action according to Hannah Arendt? दो चीजें थी, इमीडिएटली मैं बताता हूं. नंबर वन, एक्शन इज दैट ह्यूमन एक्ट where we get to see the mark of human being completely separate and different from the other animals. यानी कि ह्यूमन बीइंग का ह्यूमन होना, उसका हॉलमार्क अगर कुछ है तो ये एक्शन है. किस हिसाब से हम देखेंगे? नंबर वन. नंबर टू, व्हाट एवर वी डू थ्रू एक्शन
we don't do in order to preserve our personal and private interest, but we do through action. What do we, if not personal and private, then what? एक ही चीज, पब्लिक. यस. तो आप उसको सिंपल करते हैं. We think about our society. We think about the public matters of our society. We think about the public problems of our society. नंबर 1. नंबर 2, सो किस चीज के बारे में सोच रहे हैं? एक्शन करते हैं मतलब सोच रहे हैं. हम किस बारे में सोच रहे हैं? मेरा कैसा अच्छा होगा, मेरे फैमिली मेंबर का कैसा अच्छा हो? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है. किस बारे में सोच रहे हैं हम? वी आर थिंकिंग अबाउट, दैट इज द ह्यूमन बीइंग इज थिंकिंग अबाउट द कलेक्टिविटी, द कलेक्टिव लाइफ, द सोशल लाइफ, ओके, द ग्रुप लाइफ, ब्रॉडर सेंस ऑफ इट. नंबर 1. दूसरा, सो एक्शन इज पब्लिक इन नेचर. इट इज नॉट प्राइवेट एंड पर्सनल इन नेचर. एक्शन इज पब्लिक इन नेचर. नंबर 1. दूसरा, when we think about our society, तो क्या हम ऐसे सोचते हैं कि how to take our society what backward? नहीं ना. तो we will always keep thinking about how to take our society forward. आगे कैसे लेके जाते? तो अच्छा आइडिया क्या होगा? अच्छा आइडिया क्या हो सकता है? So we keep thinking about that. Number 1. दूसरा, we do not just keep thinking on our own. The moment we conceive an idea, find out some idea, we make it a point immediately to put forth before the others. We exchange with that. Sorry, we exchange that idea with others. And then begins a very interesting process, that is the deliberation, discussion. यानी कि thinking about public matters, conceiving ideas about how to make our public existence, public life much more better. And the moment we conceive idea, invent idea, we share with others. Number 3. Number 4, and then that creative exchange takes place, deliberation, discussion, debate takes place between all of us and among all of us. Among all of us. वो ओपनली होता है. तो आपने कहा कि नहीं, मुझे लग रहा है कि ये ऐसा करना चाहिए, तो सामने से वाला बोलेगा मुझे नहीं लगता ऐसा है. We will have to convince him. And that has to be the open dialogic system. अब हन्ना अरेंट बोलती है, power comes into being when this kind of collective public action is undertaken. Power is not a repository of capacity of an individual, but power as a phenomena is a trait of a group, trait of the public gathering. So power comes into being when we come together for the public cause, conceive ideas, share with each other, and deliberate upon that. That is where and when power emerges. जैसे हमारा ये काम खत्म होता है, पावर चला गया है. इट्स अ ग्रुप फिनोमेना. और उनका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है हन्ना अरेंट का. पावर इज, अब आपको उसका पता चलेगा, पावर इज एक्टिंग इन कॉन्सर्ट विथ अदर्स. कॉन्सर्ट का एग्जांपल लिया है उन्होंने, एक्टिंग. नहीं तो कॉन्सर्ट में अगर ये इंस्ट्रूमेंट वाला ऐसे कुछ तो उसका ही चल रहा है, उसका कोई उसे तालमेल नहीं, तो क्या होगा? कॉन्सर्ट अच्छा लगेगा क्या हमें? उसका क्यूमुलेटिव इंपैक्ट नहीं होगा. सो एक्टिंग इन कॉन्सर्ट विथ अदर्स इज व्हेन पावर इमर्जेस. और वो किसी इंडिविजुअल का एबिलिटी, कैपेसिटी नहीं. तो जनरली पावर का अंडरस्टैंडिंग क्या है, हम वो डिस्कस करने वाले हैं. जनरली इन द मेन स्ट्रीम अंडरस्टैंडिंग, power is understood as a capacity of an individual to influence the other and get other to follow one's own will या wish. ये इंडिविजुअल ट्रेट करके आता है. सी क्वेश्चंस दैट, है ना, क्वेश्चन कैसे करती है वो, उन्होंने बोला है. और एग्जांपल लीजिए, सी आर्ग्यूज दैट एक्शन एज ए यूनिक ह्यूमन एक्ट is a spectrum. A small action to great deeds. ग्रेट डीड के एग्जांपल्स किसके ले सकते हैं हम? गांधी, अंबेडकर, फुले, ताराबाई शिंदे, सावित्रीबाई फुले. आप नाम लीजिए, बहुत सारे लोग हैं. हाँ, जितने आप ले सकते हो. नेल्सन मंडेला का नाम ले सकते हो, हिस्ट्री में जाइए आप. ओके, तो ग्रेट डीड्स है. अब ग्रेट क्यों बोला जाता है उसको? बिकॉज दे एंडेवर टू ट्रांसफॉर्म द एंटायर सोसाइटी. और खाली एंटायर एक सोसाइटी नहीं था वो,
यानी कि इपोक मेकिंग बोलते हैं ना हम, ओके, वैसा उन्होंने किया है। ऐसे बहुत सारे लीडर्स है, पर्सनैलिटीज है, ऐसे बहुत सारे हैं उसमें। आप देखिए, छोटा एक्शन क्या हो सकता है? इफ यू राइट टू द कमिश्नर, इफ यू कम फ्रॉम अ सिटी, इफ यू राइट टू द कमिश्नर अबाउट अ पब्लिक मैटर फ्रॉम योर नगर, आपका मोहल्ला जो है, तो वो भी एक पब्लिक एक्ट है। लेकिन वो केटर करता है किस चीज को है? वो केटर कर रहा है आपके मोहल्ले को। लेकिन वो पब्लिक है या प्राइवेट है? पब्लिक ही है वो। दूसरा आप कर सकते हो, राइटिंग टू द एडिटर ऑफ आपका जो भी होगा ना, यहाँ पे पूना सिटी में जो पब्लिश होते हैं, जिनका एडिशन यहां से निकलता है, तो आप बोलेगे नहीं, हम लिखेंगे उसको, वो फिर छपेगा। एंड देयर बाय यू कैन मेक एडमिनिस्ट्रेशन टू पे अटेंशन टू दैट इशू। देयर आर नंबर ऑफ इश्यूज दैट सिटीज नाउ डेज फेस। बहुत सारे हैं ना, श्वेज का होता है, सो एंड सो फोर्थ। ओके, यहां से लेकर पोल्यूशन तक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो there is a spectrum of action. It can be a small action and it can be a great action. Okay, अब उसके बीच में तो कुछ भी हो सकता है. So that is how she interprets power as a collective phenomena acting in concert with others. अलग अंडरस्टैंडिंग है ना. और उन्होंने ये कहा, ये लास्ट पॉइंट होगा उनके बारे में, ह्यूमन बीइंग, एन इंडिविजुअल cannot meaningfully enjoy liberty, true liberty, if she does not participate in the public affairs. सिविक्स में हमें यही पढ़ाया जाता है, लेकिन कहा नहीं जाता है। आपको कहा जाता है कि आपको सिटीजन बनना है। कैसा सिटीजन बनना है? लॉ अबाइडिंग बताते, उतना ही बताते हैं हम। यू नीड टू बी अवेयर सिटीजन, यू नीड टू बी वेरी एक्टिव, ये बहुत कम बार बताया जाता है। हमें बताया जाता है कि देखिए, स्टेट है, गवर्नमेंट है, उसके लॉज होते हैं, हमारे लिए होते। लॉ का क्या करना है? हमें पालन करना है। लॉ अबाइडिंग सिटीजन बनाया जाता है हमें। लेकिन हैना अरेंट उस सिटीजन की बात कर रही है, उस सिटीजन की उस लिबर्टी की बात कर रही है कि जहां पे यू वुड नॉट बी फोर्स्ड, नोबडी वुड बी फोर्स्ड, बट सिंस यू आर अ ह्यूमन बीइंग, यू हैव विद इन यू दैट मार्क, है ना, एक्शन लेने का पोटेंशियल हम में है ना, दूसरे एनिमल में नहीं, हम में है वो, है ना। तो व्हेन यू यूटिलाइज दैट and participate in the public affairs, then and then only you can enjoy true liberty, या liberty in true sense अगर। liberty का मतलब कतई ये नहीं है to be able to do things the way in which we want. that is a very individualistic, personalistic concept of liberty है वो। here ends the western political thought. हाँ, आप एक चीज बची है उनके बारे में, दोनों के बारे में, ग्रामशी और हैना अरेंट के बारे में, यानी कि हमारा एक पॉइंट खत्म होगा कि व्हाट डिड ग्रामशी से अबाउट, या व्हाट डज ग्रामशी से अबाउट द स्टेट। ओके, वो हम चर्चा करेंगे, डोंट वरी अबाउट, क्योंकि वो मुद्दा था ना हमारा। मेन थ्रेड क्या था? हमने प्लेटो से शुरू किया, ओके, यहां तक आए हैं। तो वो क्या कहते हैं हम बाद में देखेंगे, डोंट। हाँ, अब मार्क्स क्या कहते हैं स्टेट के बारे में? स्टेट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ हैव्स टू एक्सप्लॉइट द वर्कर्स। यानी कि स्टेट इज नॉट अ पब्लिक एजेंसी अकॉर्डिंग टू मार्क्स। स्टेट इज एन एक्सप्लॉइटेटिव एजेंसी। स्टेट इज अ क्लासिस्ट एजेंसी, क्योंकि एक क्लास के हाथ का खेलना है वो, खिलौना है, सॉरी, वही उन्होंने बोला है। अब वो मार्क्स का अंडरस्टैंडिंग है। व्हाट डज ग्राम, बिकॉज ग्रामशी ऑल्सो कम्स फ्रॉम द मार्क्सियन ट्रेडिशन, उनका थोड़ा अलग है, वो बाद में हम देखेंगे क्योंकि उसको थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू आपको दिया है। एंड देन सिमिलरली व्हाट डज हैना अरेंट से अबाउट दैट। आपको थोड़ा हिंट मिला होगा कि हैना अरेंट must have been supporter of representative state, democratic state, but what kind of citizenry? 5 साल में 2-3 बार आपने वोट डाला, काम खत्म, ऐसा वाला सिटीजनरी उनको एक्सपेक्टेड था क्या? बिल्कुल नहीं, हर दिन। और उनका कहना ही ये है, द सिटीजनरी हैज टू बी ऑलवेज अवेयर, विजिलेंट, एक्टिव, बट कंसिस्टेंटली एक्टिव, नॉट वंस इन अ वाइल। सस्टेन्ड एक्टिव सिटीजनरी चाहिए था उनको। दैट इज द काइंड ऑफ स्टेट, उसको इसीलिए बोला गया है
कि सी कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द ट्रेडिशन ऑफ सिविक रिपब्लिकनिज्म। किसको कंट्रीब्यूट किया उन्होंने? सिविक रिपब्लिकनिज्म, यानी कि सिटीजन्स के अंदर वो पब्लिक स्पिरिट होना चाहिए। और एक्शन का मतलब क्या है मुझे बताइए? पब्लिक स्पिरिट ही है ना। एक्शन जब हम करते हैं तो हम प्राइवेट कंसर्न की बात नहीं कर रहे, हम प्राइवेट मैटर्स के बारे में बात नहीं कर रहे। आई होप यू गॉट इट। सो नाउ लेट मी कंक्लूड सेइंग दिस, we as student of pol science are going to very deeply, elaborately going to study the political dimension of the human life, यानी our own life। हम टाइगर जैसे एनिमल का सोचने वाले हैं, हमारा एक सो पढ़ने वाले एक दूसरा। बट व्हाट इज मीन बाय स्टडी ऑफ पॉलिटिकल डायमेंशन ऑफ लाइफ, यानी कि पब्लिक मैटर्स। सो पॉलिटिकल का मतलब अभी तो फिलहाल कैसे ले रहे हैं? Public matters, public issues, public concerns, public matters. And since we will be studying, looking into, reflecting on the political dash, the public matter and concerns, state inevitably comes into picture. Okay, because if we look at pol science as a discipline which guides us, which informs us, which directs us in the process of organizing our collective life, then we have invented one institution and that is the state. अब पॉल साइंस में ऐसा एक ही थिंकर है जो मार्क्स है और दूसरा उसको एक्सटेंड करने वाला ग्रामशी है, जिन्होंने स्टेट को डीपली ऑब्जेक्ट किया है। अब जब हम इंडिया की तरफ आएंगे, स्पेशली इन द मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थिंकर, हमें 5 थिंकर है। सर सैयद अहमद खां, दूसरे अरविंदो, तीसरे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, चौथे गांधी जी है और 5वें एम एन रॉय है। अब उसमें गांधी शेयर्स अ लॉट विथ मार्क्स, स्पेशली अब वो फंडामेंटल डिफरेंसेस दोनों में थे, नो डाउट अबाउट दैट, बट मार्क्स वाज डीपली क्रिटिकल ऑफ मॉडर्न स्टेट एंड फॉर दैट मैटर नॉट ओनली मॉडर्न स्टेट, मिडिवल स्टेट एंड एंशिएंट स्टेट, स्लेवरी स्टेट जो था। what kind of similarity do we get to see between Gandhi and Marx? Gandhi also was deeply critical of modern state. अब आपको सरप्राइजिंग लगे, गांधी का कहना यह था मॉडर्न स्टेट इज मैनिफेस्टेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस। व्हाट इज मॉडर्न स्टेट? मैनिफेस्टेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस। आपका मिलिट्री, आपका पैरामिलिट्री, आपका पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, आपका प्रिजन, आपका जस्टिस सिस्टम, ये पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस बोलते हैं उसको, नंबर 1। दूसरा उन्होंने बोला है स्टेट इज अ कोअर्सिव मशीन। 2 शब्द इस्तेमाल किए, मशीन भी है वो और वो कोअर्सिव है। इट सैप्स ह्यूमन इनिशिएटिव, वो हमें इनिशिएटिव करने ही नहीं देता है, हमें बताता है ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। इट सैप्स इनिशिएटिव, किल्स इनिशिएटिव, है ना। और इसीलिए वो बोलते हैं सिंस इट इज मैनिफेस्टेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस, इट इज कोअर्सिव, सप्रेसिव, it saps human initiative. The concluding argument by Gandhi about modern state is, therefore, it is an obstacle in the moral development of human being. ये सिमिलैरिटी है। अब ये क्यों ऐसे हुआ वो बाद में हम देखेंगे, तो दैट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग सिमिलैरिटी। एंड जब हम उनका आइडियल स्टेट पढ़ते हैं, गांधी का नाम आइडियल स्टेट ही है, राम राज्य जिनको उन्होंने बोला है। अब राम, वो जो रामायण वाले राम वो नहीं थे, उन्होंने बोला कि वो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, बट द काइंड ऑफ इमेज ऑफ राम दैट वी गेट टू सी आप बदला है। अब वो कौन से, तो उसका नाम भूल रहा मैं, रणवीर रणवीर सिंह वाला, वो अलग राम है। मूवी आई थी ना रामलीला, नाम बदल दिया बाद में, तो वो वाले अलग है वो। हाँ, पोस्टर दिखता है पीछे, आपने मूवी देखा है ना, पीछे जो राम है ना वो ऐसे जिम में जाते लगेंगे आपको वो, बिकॉज दिस इज हाउ वी हैव कंसीव्ड राम। अब आप तो वो सैफ्रनाइज हो चुके हैं, यानी कि बीजेपी और हिंदुत्व परिवार वाले जो राम बताते हैं वो राम हमारे मन में है, अब सामने हमारे सबके नहीं, वो मेन स्ट्रीम में आए हैं वो, तो वो एक अलग बात है वो। सो राम राज्य फॉर गांधी सिग्निफाई व्हाट? प्लेन एंड सिंपल सी भाषा में अ जस्ट स्टेट, प्लेन एंड सिंपल। उन्होंने, अब ये थोड़ा गलत लगेगा आपको ट्रांसलेशन, उन्होंने लिखा है वैसे कि वो स्टेट ऐसा होगा जहां पे, अब ये तो थोड़ा बहुत गलत लगेगा, मेरा हिंदी अच्छा नहीं है, कुत्ते को भी न्याय मिलेगा।
अब ह्यूमन इंसान की बात, यानी कि ह्यूमन बीइंग की बात करें, इंसान की बात करें, उसका मतलब है अगर उनको जस्टिस है, एनिमल को जस्टिस देने वाला अगर वो स्टेट होगा, आइडियल स्टेट राम राज्य, तो वो ह्यूमन बीइंग के लिए जस्ट होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा वो। सो जस्ट स्टेट, सो राम राज्य इन गांधीज आइडिया represent just state. Okay, just to conclude the discussion, अब ये बचा है सिलेबस का, वो बाद में करें, यू डोंट वरी अबाउट दैट, दैट्स अ फॉर्मेलिटी. नाउ एज फार एज द रेफरेंसेस आर कंसर्न, पॉलिटिकल थियोरी 11th स्टैंडर्ड बुक, वो कॉन्स्टिट्यूशन का तो आप पढ़ते हो, उसका कोई इश्यू नहीं है. पॉलिटिकल थियोरी 11th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी. देन वन स्टैंडर्ड बुक फॉर पेपर 1, ओपी गौबाज इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थियोरी, वही आपको इस्तेमाल करना है. अभी तो फिलहाल वही देखिए, ओपी गौबाज इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थियोरी, ओपी गौबाज इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थियोरी, that is the only kitab abhi as of now. Class notes are going to be very elaborate, don't worry about that. So third source would be the class note. And we have come up with 3 volumes of Pol Science through question answers, 3 volumes. तो ये आपको खरीदना है, volumes आप लीजिए. ओके, नहीं 4 नहीं आया है, इट इज ऑनगोइंग प्रोसेस, वो अगले साल आएगा, जनवरी भी नहीं, आपके मेंस तक आएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, मई जून तक आएगा वो अगले साल. सो एक्चुअली you are supposed to rely on only 2 sources. One is the class note and other is the volume. That's it. Okay. So NCERT's political theory 11th standard, OP Gauba introduction to political theory, and ये volumes. Volume 1 covers section A of paper 1. Volume 2, अब मैंने एक ही लाया है volume. Volume 2 covers IGP, the second section of paper 1, and volume 3 covers section A of paper 2, comparative politics, concepts, theories, institutions, and issues. Okay. So tomorrow Pankaj sir will discuss the syllabus of paper 2. Okay. And we will take it forward. Just for this week and coming week, we are going to have just 2 lectures. But then after 2 weeks, then we are going to extend it to till Thursday. So regularly we will have 4 lectures in a week from Monday to Thursday. So start reading the NCERT on political theory. You must have looked into the syllabus and PYQs as well. Please look into PYQs from at least 2000 to 2025. Okay. We are going to discuss syllabus very elaborately, don't worry about that, and we invest a lot of time in discussion of theoretical part. बहुत ही elaborate उसका discussion होता है, you don't worry about that. दूसरा, the material is more than sufficient, and this would be my humble request to not to refer to any material which is available in market. I can understand a reference book, you can read that, but जो available है ना बाहर, बहुत मार्केट में होता है वो मत पढ़िए, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस वो रहा है. अब द मेंस टेस्ट सीरीज इज गोइंग ऑन. ओके, पॉल साइंस, देयर आर ऑलमोस्ट 45 स्टूडेंट्स who are writing test series for the mains examination, and there are almost 15 students from Delhi, and they end up writing the same thing because they refer to the same material. वो बड़ा पाव जैसा है. हाँ, I should not say that, but आपको लगता है अच्छा ये बहुत आसान है वो, but you cannot rely on that material to write the answers, है ना. So material की आप चिंता मत कीजिए, तो you can fully rely on that. तीसरी और सबसे अहम चीज, and please, this is again would be my humble request, let us not forget to build on, to develop the language, articulation, and terminology of PSIR. So right from chapter 1st, I am going to make it a point to, and we do that every year, to circulate model answers, 3 to 4 model answers of each chapter. ये तो आपका है ही है, वो तो आपका होमवर्क जैसे होगा. But what we are going to follow in the class is to discuss all PYQs on the given chapter and circulating with model answers, what, 3 to 4 questions. Then we will have, before that, as and when we complete the first chapter, session on writing practice. I will share multiple answer sheets that I have been assessing, both me and Pankaj sir as well, of the toppers. So वो भी आपको देखने को मिलेगा, don't worry about that. Okay, so that's it for today. Now, if in case you have any doubt, feel free to ask that. Yes. हाँ.
हाँ, now if time permits, you can read Plato to Marx by Subrato Mukherjee. Yes, if time permits. Otherwise, if you have time crunch, fully rely on the class note and the volumes. I am considering volume as integral part of the material. Yes, that's it. And current का आप आपका थोड़ा सा रूटीन होने दीजिए. You would, sorry, 2 sets would be made available of current polity as well as IR, because every year what we do, and this year we did it on, sorry, did it in I guess around 10th of June. So last 1 year का Indian polity current events and IR current events, which we prepare keeping in mind the requirement of the pol science students. वो मटेरियल भी आपको अवेलेबल दिया. करंट का जो है वो ऐप पे डाला जाएगा. यू डोंट वरी अबाउट दैट. ओके, यस. एनीथिंग एल्स? हाँ, आप सेकंड पेपर का सर भी बताएंगे आपको कि क्या रेफरेंसेस है उसमें. एक वो एंड्रू हेवुड का है, वो बताएंगे सर, ग्लोबल पॉलिटिक्स. और दूसरा जो है वो एक फॉरेन पॉलिसी का सर बताएंगे. हाँ, ऑक्सफोर्ड का एक है वो, अगेन आई विल से टाइम परमिट्स, ऑक्सफोर्ड हैंडबुक ऑन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी. वन ऑफ द एडिटर हैपन्स टू बी सी राज मोहन. प्रताभानु मेहता भी है उसमें. वो पब्लिकेशन है 2014-15 का, बट दैट्स अ वेरी वेरी वंडरफुल वर्क ऑन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी. बड़ा किताब है, नोट्स में है वो, लेकिन अगर किताब आप पढ़ सकते हो तो नथिंग लाइक दैट इफ टाइम परमिट्स. और सर भी बताएंगे. इनका है हर्ष पंत, अच्छा नहीं लिखते, लेकिन वो एक थोड़ा अपडेटेड किताब है उनका. सर बताएंगे. आई शुड नॉट कंफ्यूज यू, सो स्टिक टू ओनली दोज. सो एज फार एज पेपर 1 इज कंसर्न, द मस्ट रीड रेफरेंस इज ओनली ओपी होगा. बाकी मुखर्जी का इफ टाइम परमिट्स यू कैन गो थ्रू दैट. एज फार एज द आईजीपी इज कंसर्न, you can fully rely on the class notes along with the volume 2. That's it. And current का तो आपको मिलेगा ही, don't worry about that. Okay? Anything else? हाँ, तीसरी बात, आप टीचिंग के मेथड के बारे में कुछ भी आपको लगता है तो उसी दिन बताने का मुझे. डोंट वरी अबाउट दैट. सो इफ यू सीक clarification of something, change in the style of discussion, you don't worry about that, क्योंकि ये इंटरैक्टिव होने वाला है. Otherwise, it would be very difficult to make sense of the theoretical part of pol science. Okay? Yes. और शुरू में अगर थोड़ा डिफिकल्ट भी लगेगा ना, तो थोड़ा आपको सस्टेन करना पड़ेगा वो. बिकॉज इन अ मंथ, लेट अस से मैक्स इन अ मंथ, यू वुड बिकम हैबिचुअल ऑफ द टर्मिनोलॉजी. डोंट वरी अबाउट दैट. हम मिलियन टाइम्स उसको रिपीट करने वाले हैं. डोंट वरी अबाउट दैट. आज ही मैंने कितनी बार कुछ चीजें रिपीट की है, तो वो रिपीटेटिवली होगा. और जैसे देखिए कि कंटेंट इज इंपॉर्टेंट, नो डाउट अबाउट दैट. कॉन्सेप्ट्स है, थियरीज है, आइडियोलॉजीज है, थिंकर्स है, वो एक है. लेकिन उसका लैंग्वेज जो है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और होता क्या है ना कि 99% एनर्जी इज ऑब्वियसली कंज्यूम्ड इन कंसोलिडेटिंग द कंटेंट ऑफ पॉल साइंस. और बचता कुछ नहीं है ना फिर. वो करेंगे कैसे वो? मैं एक एक का पेपर 2-2 घंटे लगता है मुझे वो एसेस करने के लिए. इतना बेकार लिखते हैं कभी कभी वो. अब उसको कह भी नहीं सकते वो दे आर गोइंग टू राइट मेंस इन मिडल ऑफ द अगस्त. कुछ नहीं होने वाला है उससे. एंड दे कीप राइटिंग मीन्स ट्वाइस थ्राइस 4 टाइम्स, फिर भी नहीं होता. इस चीज की वजह से नहीं होता है. तो जब आप पढ़ोगे ना कोई भी चीज, बीट नोट्स और द वॉल्यूम्स, read it from both perspectives. The content undoubtedly yes, but even from the language perspective. That is important. Okay.